I feel for Salman Ali Agha is saying we're used to this situation because we're always in it. 3 changes for KP, you can see them highlighted, and not anymore. And 80 of Southern Punjab, same side. The 2 umpires, Walid Yaqub and Shozeb Raza, officiating in this game. Such a huge game in the context of this tournament. KP needs to get back to that winning ways. They're so used to it. And it was almost surprising to see them lose those 3 games. Their bad body language was down. They looked frustrated in the last game they played. So they have to get back to the winning ways. On the other hand, Southern Punjab, I think it will be a good toss to lose for them also, because second time batting gets easier and easier. The ball comes nicely onto the bat under lights. They've got a very solid batting lineup. Umar Sadiq in it. After his involvement in the game, I think the luck for Southern Punjab has changed. Change of order for Israrullah. He will be opening in this game in place of Haris, who is definitely gone for the national duty alongside Sahibzada Farhan. So we're in for a cracker of a game for sure. Ali Majid will take the new ball for ATF Southern Punjab. As the captain said, we got 2 games, we need to win them and get to 10 points. And then wait for the net runner. But how evenly poised it is. If ATF Punjab wins this one, then the tournament stays open for the games to come. We'll have a lot of teams at 10 points. The advantage that these 2 teams have is they both have 2 games, including this one. Central Punjab is done with their 10. Sindh is done with their 10. Northern has 1 left. KP won the toss, decided to bat first. Yes, Israrullah right there. He's been in and out of this side. And now that Haris is gone to national duty, so he gets the full opportunity. There was changes bound to be made in the KP side. That played 3 matches in a row. And you could see some tired legs. Imran Khan Senior rested out. And as I said, Haris is a forced change. And then you have, of course, another change coming in, with Niaz Khan being left out, and you're adding in 1 more bowler. Arshad Iqbal is also back after a rest for them. Sahibzada Farhan is going to face the first ball. Right arm over is going to be Ali Majid. Match 28. Let's play. Off the mark, and that's a good shot with a boundary, because square leg is the fielder outside and the other one is long on. Yeah, you cannot afford this line. On towards his leg stump. These are easy pickings for somebody like Sahibzada Farhan. There was a fielder placed, but the timing was so sweet that there was no chance for both fielders. Ali Majid Shah will look to skip the ball into the batter. Asking for 2 again, Sahibzada Farhan. It's a big vacant zone, but Israr says no to this. Just a 1. Ali Majid Shah has been brilliant with that new ball for Southern Punjab. The most impressive part is that he started bowling very good to the left-handers. That was missing in his bowling earlier. Now he's developed that art, that he bowls very nice to the left-handers. He gives some air. That will be a good challenge for somebody like Israrullah. Saw a struggle with Northern trying to put up a score when they decided to bat first on the same pitch earlier in the day.
KP must also be having a score in their mind that they need to get at the end of 20. Edge, and that will go through. It will race away. It's a new ball. Second boundary in the over. Get the slip in. Why wouldn't you? Because this is what I was mentioning, that he has developed this delivery. Ball's really nice outside the off stump, beaten by pace. There should have been a slip. This is the first over. You've got to attack. Yep, that's what he's suggesting. Need to have a slip there. Still no slip. The very straighter third man now. Drive, and that'll be 4 more. Third in the over. KP is back. 770 boundaries in the national T20. Nicely driven. Good placement right between the two fielders. If you ball that full in his zone, he's not going to miss out. He's too talented for that. ये वाला शादी 13 for no loss after the first over. Yeah, 3 changes have been made by KP. Sararullah coming back. Rehan Afridi been promoted because Haris is left for the national duty. And the last change, I think this is the best one, Arshad Iqbal. He was rested for a few games, now back. That will give a lot of confidence to that KP side. On the other side, Southern Punjab, well, they've been unchanged from last couple of games. They've stuck to these youngsters. And it is a very important game. They have to deliver. Samin Gul has been good. He's been impressive in the tournament. One of the bowlers, ATF Punjab, Southern Punjab, ride their luck on. His inclusion was a little delayed in their side, but he gets the ball to move and talk, especially when it's new. 41st appearance for him in T20 cricket. He's got a slip. It starts with a wide, exaggerated movement there. Yeah, although the line quite not right, but this will give a little hope to Samin Gul. There is swing available. In the first game we saw Sohail Tanveer getting some swing. That is a good take by Umar also. So definitely this will give hope. But you got to pitch the ball in the right areas to get reward out of this swing. So Maqsood is in the first slip. Yeah, look at those results early on in the tournament. They won 5 games and then lost 3 games consecutively against Central Punjab, Northern and Sindh. I think that is a worrying sign for KP. But the margins are less. That will keep them hunting. They need to win this game to get those winning momentum going. He's heading down. He's getting that curve. Told you he can make the new ball talk. He'd be looking to start somewhere outside off to finish within the stumps. He did that actually, but he's still getting an extra bit of movement. That's a good sign for Samin Gul. He's getting that swing. And against Israrullah, if he's able to get him in, that will come very handy. He's just making sure that he's got those fielders right. Fine leg inside the circle, will probably be going, yes, back at circle at the boundary line, and the fielder at 45 is coming at mid-wicket. That is mainly that he will swing the ball into Israrullah.
Again, that edge. And gone through. Ali Majid couldn't cut it off. Gone over his hands. It's just a second over, already 4 boundaries. Siraj is just poking at the balls outside the off stump. He's got to be careful. It's the second edge of his bat. Yeah, just fetching outside the off stump. You could have easily let it go. But this T20 cricket, you just go after anything that is outside the off stump. A better effort was required from Ali Majid Shah. It's fielding which is the most important part. You've got to be spot on in these games. First slip is now a little wider. Sohaib Maqsood. Just creating that position. Sohaib Maqsood in that first slip, so he can just get more reach if he has to dive to the left. Now get another slip because the ball is swimming. Now he heard me. There is a second slip in place now. This is a good move. This is an attacking move by the captain Salman Ali Agha. Zain Abbas in the second slip. Again, the same thing that we were discussing in the afternoon game, and that is when you win the toss and you decide to bat first on a pitch like this, it's got runs, you feel it's a tricky situation. How many runs are okay or how many runs are good enough? The first game 160 odd. The captain also said we were 20 short, so which means they're targeting 180 plus on this. Salman wanted to bowl, so he's confident they can chase. It's a great ball and it's not collected well by Umar Siddique. 2 gone, 19 for no loss. Bowling change. Right arm over. Straight away Mohammad Ilyas into the attack. 13 was scored of Ali Majid's first over. Ilyas has been good. He's been good with the bat as well for them. He's got 1 slip. He's got Saib Zada Farhan on strike. 50th match for him, T20. 2 men inside the circle on the onside and 4 on the offside. In fact, 5 include a slip. There's a 3rd man in place. So it's a 6-3 field at the moment. Starts with a wide. Two wides already. You got to be disciplined enough. ADF, Southern Punjab, they've played good cricket but in patches. But they need to deliver now because we're coming to the business end of this tournament. You cannot afford a lose here. Because if you lose one, then it will be very difficult to catch up. It's the same thing what we noticed in the first game. The fuller lengths are a little tough to put away. But the word around is that you can get 180, 80 plus on this pitch. Northern should have
got to that 190 mark easily. I think they missed out in those middle orders. They played so slow. Umar Amin, Nasir Nawaz was going well. They lost wickets at wrong time. In my opinion, this is a 190 runs pitch. Okay, if you say so, then KP will score that. We'll get 190. Pakistan, England are playing each other. We will have a final here on the 19th, and then Pakistan will play England on the 20th in the evening in Karachi National Stadium. That's the first T20 of the 7. 4 to be played in Karachi, 3 in Lahore. And if you want to go there and enjoy it, make sure you get there on the first game, because the first day's ticket collection will go towards the flood affectees. So go ahead and buy your ticket today to aid their contribution towards the flood victims. That's a great cause. You can see buy tickets now at pcb.bookme.pk. Now a little more sensibility is coming, because those boundaries were coming in too quickly. 4 of them. You want to keep a fairly quiet power play as a bowling unit. You don't want to go over 45 runs for the opposition. In modern day, you do feel, they say that if you can score 45 or 50 in the power play with the 1 wicket down, that's acceptable. 22 on board. Upish, and he'll clear that field. That's a boundary. It was always going away, and they're targeting Ali Majid. Yeah, not quite timing it right. Saibzada Farhan wanted to go over that mid-on fielder. Look at that. Yeah, the timing not quite there, and very lucky that it just went to the right of Ali Majid Shah, who was in with a chance. The ball is falling Ali Majid Shah. Earlier he missed out on a boundary, and this one, maybe somebody like Hassan Khan, he might have got it. You would be a very strict coach. Oh, good shot. Good shot, good shot. Even after touching the boot, it's racing away. Boundary number 6. Fantastic shot. Straight as an arrow. Wonderful, look at that. Picture perfect. Even touched the boot, it went again to Ali Majid Shah, and he just moved around it. A better effort. You got to be vigilant enough in this field to stop these runs. Ali Majid Shah at this moment, he's struggling. Imagine the force on that shot. It hit his boot and still went for a 4. Single down to third man will end the over. 3 gone. It's 31 for no loss. Crowd has been really impressive, especially in the night games. They've come in numbers. Tonight also there are people in the Fazal Mahmood enclosure. It's almost full. We're just enjoying this lovely atmosphere. Cricket has been excellent in close games. The best playing against the best. It's just been amazing week of cricket. He was playing for the swing. It held its line. He would know. Tamim Gul earlier was the part of KP side, and now he's representing Southern Punjab
He's just an amazing character of the game, always into the game, always enjoying his bowling, and he's a very good bowler, very strong, gets that hard length going, balls in the right areas, consistent, gets the swing also. Slip has gone out. Not surprised because they're 31 for none. Sahibzada knows it. You don't want to be risking against the main goal. He's not happy also. Screen probably, somebody moving. He's definitely not happy. Talking about some movement above the side screen. The man is sitting in the white shalwar kameez, is probably just above the bowler's arm. There are two of them. Straight to the fielder. It's not really coming on nicely as Farhan would be hoping. It's just about bowling those right lengths here is really working. 190 pitch, but no, it's not that easy. Unless you just really attack the opposition, and something like what Northern faced in the power play. Central Punjab took them off guard. This is what 190 looks like. Got to be talented enough like Shoaib Malik to do it. He slapped that back to the bowler. It was well done. Good recovery from Sameen Gul. Yeah, the toss, it was very surprising. In the first game I'm talking about, Umar Amin won the toss and batted first, saying that it is an excellent pitch, but he changed his mind after that. After the game, he was like, it is not what I thought. The ball was holding up a little, but Southern Punjab should feel comfortable. They're batting second and the ball will skid. So to me, it is still a beautiful pitch. You must get to that total of 190. But you got to apply yourself. Sahibzada, Farhan, Israrullah, they've got the potential to do it. That's Ahmed Bashir, fast bowler from Lahore. Hasn't got a game for Southern Punjab yet, but is also a very good prospect. There's a ball in his follow-through that has hit him on his right hand. He didn't feel it in the heat of the moment, but then the pain starts setting in. He wanted some spray. It's a good start, this, going at 8.4 runs and over. Sameen Gul has done well. That's the shot. Sameen has just put some sanity in this fast start that KP has planned against them. And Sameen also knows that it's just the first 2 overs or so that he'll get that swing going, if there's any purchase that can come. It's too wide. Oh, well done. Umar Siddiq surely saved 4. Could have been 5 wides. That is a great take. You've certainly saved 4 extra runs.
There was a wide, all right, but that is a fantastic save. Have a look at that. It was always going away from him. He's a left-hander, remember. That is a top save. There is swing for Sameen Gul. Apologizing, rightly so. That was way outside the off stump and always going away. Oh. Decide if you want the run or not. Sameen Gul has been impressive, and I guess KP understands that, so let him get off this of his spell. He's bowling his second. Khalid Usman hasn't had any smile at the toss. He's not very impressed with the last three performances, whether they were close finishes or not. The 2 points matter, and they need that opening in Multan. They haven't yet earned their 2 points at the Multan Stadium. All 5-1 at Rawalpindi in the first leg of the Kingdom Valley National T20. Saw the weight, flashed at it, wide given. He has to bowl that again. The smile on your face says it all. Yeah, it was a close one. You were going somewhere. That's. It's a little harsh call. Have a look at it. That's a wide. No, he went after it. Yeah, very harsh. If you move the blue line 5 inches to the right, then yes. I'll take it as far as it brings a smile on your face. That's all right. Oh, Ali Majid just fumbled. Could have been a dot ball. So ends with a single. 4 gone, 34 for no wicket. इस सामने फजल महमूद इनक्लोजर में अच्छी खासी रौनक लगी हुई है। अभी भी तमाशाइयों की आमद का सिलसिला जारी है क्योंकि होम टीम खेल रही है ATF सदर्न पंजाब। मोहम्मद इलियास, अब ये एक पैंतरा बदला है कप्तान ने। साहबजादा फरहान आज भी बड़ी अच्छी इनिंग्स खेल रहे हैं। इस टूर्नामेंट में तकरीबन हर बार वो अपनी टीम को पावर प्ले में अच्छी इब्तिदा फराहम करते रहे हैं, उनके ओपनिंग पार्टनर बदलते रहे। आज इसरारुल्लाह इनिंग्स का आगाज कर रहे हैं, लेकिन इनकी सेहत पर ज्यादा असर नहीं हुआ। ये अपने अंदाज से ही खेलते हैं। इस वक्त अली माजिद को लॉन्ग ऑन पर भेज दिया गया। जो दूसरे इस वक्त डीप फील्डर हैं, स्क्वायर लेग बाउंड्री पर हैं। ये गेंद छोड़ती हुई चली गई। ये लेग कटर थी और ड्राइव करने के लिए गए साहबजादा फरहान। बाजार ऐसा लगा था जैसे आवाज आई हो, लेकिन ये गेंद के बैट से टकराने की नहीं थी। आवाज लाजमी आई थी, कुछ तो आवाज थी, लेकिन ना किसी ने अपील की और बेहतर रहा ये। वैसे साहबजादा फरहान के लिए अच्छी क्रिकेट खेलते हैं, अटैकिंग क्रिकेट खेल रहे हैं, स्टार्ट मिलते रहे, बहुत ज़्यादा कैपिटलाइज नहीं कर पाए ज़्यादा, लेकिन इनका रहना बाहर केपी के लिए बहुत ज़रूरी है। उठा खेला, पॉइंट के फील्डर के पास मौका है, पीछे दौड़ते हुए मुश्किल कैच ये लिया, और ये सिर्फ हसन खान ही कर सकते थे, क्योंकि कभी भी बैकवर्ड दौड़ते हुए हाई कैच लेना आसान नहीं होता।
और काबिल तारीफ हैं हसन। स्विंग की वजह से बीट जरूर हो रहे थे, थोड़े से फ्रस्ट्रेट हो गए फरहान यहाँ पे, बड़ी शॉट मारने गए और ये लेंथ शायद लेग साइड पे खेलना चाह रहे थे लेकिन खड़ा कर दिया बॉल। और ये हसन खान ओवर रन कर गए थे, मुश्किल कैच को और मुश्किल बना लिया था अपने लिए, लेकिन शानदार नजर इन्होंने रखी और पहली कामयाबी इलियास के नाम। यह खराब शॉट खेलकर आउट हुए साहबजादा फरहान। उनने बनाया 16, खैबर पख्तूनख्वा 34, 1 विकेट के नुकसान पर। मोहम्मद हारिस ने क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को ज्वाइन कर लिया कराची में, इसलिए रेहान आफरीदी को मौका मिला है। T20 में भी वो अपनी सलाहियतें दिखाएं। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में तो हम कई बार इनको देख चुके हैं। पिछली 2 बार जो खैबर की टीम चैंपियन बनी थी, ये उसमें विकेट कीपर बैट्समैन रहे। इस वक्त दोनों ही ऐसे बैट्समैन हैं, रेहान आफरीदी और इसरारुल्लाह, जो ज्यादा फर्स्ट क्लास क्रिकेट की ही शिनाख्त रखते हैं, ना कि T20s की। और ये उम्दा शॉट इस बार आखिर में पूरी तरह इख्तियार में नजर आए और ये शॉर्ट आर्म जैब जिस पर 4 रन पाए इसरार ने। सरप्राइज किया था इलियास ने शॉर्ट डिलीवरी से, कुछ लम्हे के लिए लगा कि उन्होंने आंखें बिल्कुल हटा ली थी, लेकिन बल्ले ने जो मिलाप किया वो मिडिल के बीच में से किया। ये थोड़ा सा स्ट्रगल करते नजर आए हैं इसरारुल्लाह, लेकिन अभी पार्टनरशिप जारी रखनी पड़ेगी। किनारा लगा और लाजवाब कैच। सुहेब मकसूद ने डाइव करके इस गेंद को कलेक्ट किया। बैक टू बैक 2 विकेटें ले ली मोहम्मद इलियास ने और ये बड़ा धचका है खैबर पख्तूनख्वा के लिए। उनके दोनों ओपनर सेट होने के बाद चलते बने। परेशान रखा हुआ था ATF सदर्न पंजाब के बॉलर्स ने इसरारुल्लाह को, काफी दफा है जिनके उड़ते हुए नजर आए, लेकिन इस मर्तबा बहुत ही आला कैच, लो कैच अपने दाएं जानिब नीचे जा रहा था। मकसूद बहुत ही उम्दा कैच और उम्दा बॉलिंग, टारगेट के हिसाब से आउटसाइड ऑफ स्टंप की कॉरिडोर को अपनाए रखा। एक और झटका KP को 17 बना के इसरारुल्लाह वापस 38 पे 2। कामरान गुलाम आ पहुंचे हैं, 26 बरस इनकी उम्र है और T20 में इन्होंने खासी हद तक अब अपने कदम जमा लिए हैं। 1 सेंचुरी बनाई हुई है पिछले बरस कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में, ये उनका कारनामा सामने आया था। 2 बिल्कुल ही अब नए नवेले बैट्समैन है पिच पर, तो ये अच्छे आसार हैं यहाँ ATF सदर्न पंजाब के लिए। तो शुरू में इनको किस्मत से चौके मिलते रहे KP को, लेकिन बॉलिंग अच्छी की, स्विंग का भरपूर फायदा उठाया और इलियास ने अच्छे एरियाज में गेंद किया। इसरारुल्लाह स्ट्रगल कर रहे थे आउटसाइड ऑफ स्टंप, शानदार कैच लिया फिर मकसूद ने स्लिप में। अपना पहला रन हासिल किया, एतमाद से गेंद को ड्रॉप किया मिड विकेट खाली पोजीशन पर। और इस ओवर में ये देखिए, ये बहुत ही शानदार कैच था। कई बार
जब दाएं तरफ स्लिप के कैच आता है लेफ्ट हैंडर के खिलाफ तो कई बार गलतफहमी भी हो जाती है कि शायद विकेट कीपर जाएगा, क्योंकि उमर सिद्दीक लेफ्ट हैंडर भी हैं, लेकिन सुहेब मकसूद पूरी तरह मुस्तैद खड़े हुए थे। ये अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी होती है जब आप स्लिप फील्डर होते हैं। एक डिस्टेंस आपने डिसाइड करना होता है कीपर के साथ, और ये डेफिनेटली उन्हीं का कैच था। बहुत कम टाइम मिला रिएक्ट करने का, लेकिन शानदार कैच। फीट मूवमेंट नज़र भी नहीं आई इसरारुल्लाह की जानिब से। जब स्लिप खड़ी हो तो ये गाइड वाला शॉट खेलना बहुत खतरनाक हो जाता है। एक महंगी ओवर के बाद अली माजिद को यहाँ फिर लाया गया है। पवेलियन एंड से बॉलिंग कर रहे हैं। रेहान आफरीदी जो है ये बहुत अरसे के बाद T20 का मैच खेल रहे हैं। शायद 4 बरस के बाद इनको मौका मिला है इस फॉर्मेट में। दो 2018 में जब मुल्तान में नेशनल T20 कप के मुकाबले हुए थे मौसम सरमा में, तो उस वक्त ये खैबर पख्तूनख्वा की टीम का हिस्सा थे। इससे भी अंदाज़ा होता है कि कितना मुश्किल है इस टीम में जगह बनाना। प्लेइंग 11 में खैबर पख्तूनख्वा के पास एक से बढ़कर एक क्रिकेटर है। ज़्यादा इन स्विंग करते हैं, इससे 4 फील्डर हैं लेग साइड में, लेकिन स्क्वायर लेग के खिलाड़ी नहीं रोक सके दूसरा रन लेने से। अच्छी कप्तानी है सलमान अली आगा की जानिब से। प्रेशर बनाए रखना चाहते हैं। 2 विकेटें गिर गई हैं बहुत जल्दी, एक ही ओवर में, बल्कि एक गेंद के फर्क से। और अर्ली ऑन अली माजिद को फेस करना आसान नहीं है, क्योंकि स्किड करता है बॉल, इनका अंदर आता है। यहाँ विकेट कीपर भी क्योंकि बिल्कुल बैट्समैन के सर पर आकर खड़े हो जाते हैं, इसे आप चार्ज भी नहीं कर सकते, क्योंकि वैसे भी अगर बॉलर इन स्विंग विकेट टू विकेट बॉलिंग करता हो तो ये और मुश्किल हो जाता है बाहर निकलकर शॉट खेलना। और जब विकेट कीपर विकेटों के साथ लगा हुआ हो तो फिर एक वैसे ही एक नफसियाती तौर पर भी बॉलर जो है वो हावी रहता है बैट्समैन पर। चार्ज करने के लिए स्पिनर के, और स्पेशली अली माजिद इस तरह के स्पिनर पे आपको बहुत क्विक होना पड़ता है। आपको जल्दी लाइन और फ्लाइट जज करनी पड़ती है, ज़्यादा फ्लाइट देते नहीं। एक शानदार नमूना इसका हमने देखा था। शफीक ने बहुत अच्छे कदम इस्तेमाल किए थे इनके खिलाफ, लेकिन उसके लिए बड़ा दिल और टेक्निक बहुत ज़रूरी है। अच्छी गेंद, दिफाई बल्ले से खेलने पर मजबूर हुए रेहान आफरीदी। 6 ओवर्स और पावर प्ले का खात्मा हुआ 44 पर 2 KP। इब्तिदा में रन्स जो हैं वो काफ़ी बने KP के। कुछ खुशकिस्मत एजेस रहे इसरारुल्लाह के भी। शानदार शॉट्स भी देखने को मिली। ये अच्छा शॉट था, थोड़ा सा रिस्की ज़रूर था, और इस बार विकेट अपनी थ्रो कर दी। ज़बरदस्ती ये शॉट खेलने गए सरदादा फरहान, और ये बहुत ही उम्दा कैच था हसान खान का, और उससे भी उम्दा कैच ये था स्लिप में। सलमान अली आगा जिन्होंने बैटिंग की बजाय बॉलिंग में ज़्यादा कारनामे किए इस टूर्नामेंट में। तो खैबर पख्तूनख्वा की नज़र कहां पर होगी, क्योंकि ज़्यादातर जो टीमें हैं हमने देखा है कि वो 200 रन्स को हदफ बना नहीं रही। आज नॉर्थन की टीम के पास विकेटें भी थी, लेकिन उन्होंने गलती की। वो निस्बतन जो है कम हदफ को उन्होंने जहन में रखा, और उसका खमियाजा भुगतना पड़ा। विकेट कीपर खासे एक्साइटेड हैं। उमर सिद्दीक विकेटों के पीछे। शाम के वक्त बैटिंग खासी बेहतर होती है। मरीना तो कितना हदफ होना चाहिए जहन में इस वक्त? देखो 180
80 का तो मिनिमम इनके पास होना चाहिए, क्योंकि रिसोर्सेज भी बैटिंग में मौजूद है। अभी कामरान गुलाम खेल रहे हैं, रेहान मौजूद है, उसके बाद आदिल अमीन, मोहम्मद सरवर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, आमिर अजमत बहुत जारहाना बैटिंग करते हैं, खालिद उस्मान खुद हैं। सेफर साइड जैसे हमने देखा, आपने भी बात की कि रात के मैचेस में थोड़ी सी आसान कंडीशंस हो जाती हैं बैटिंग के लिए, तो आपका टारगेट जो है वो 180 होना चाहिए मिनिमम। सलमान अली आगा बहुत जल्दी एक तो ओवर खत्म करना चाह रहे हैं और बहुत तेज बॉलिंग करने की कोशिश कर रहे हैं इस पिच पर। क्या यही सही अंदाज है फिंगर स्पिनर के बॉलिंग करने का रफ्तार के जिम्न में? तो थोड़ा सा स्किड करता है गेंद, और यहाँ पे अगर हवा दी जाए तो ये जिस तरह के बल्लेबाज हैं ये उठा बाहर ही फेंकेंगे। अच्छी वेरिएशन करते हैं ये, कभी तेज कभी कम, लेकिन ज्यादा हमने इन्हें तेज रफ्तार के साथ गेंद करते ही देखा है। विद इन विकेट्स रखते हैं। अच्छी बॉलिंग सलमान की, जिसमें सिर्फ 4 रन आए, 48 पर 2। किंगडम वैली इस नेशनल T20 कप टूर्नामेंट के ये ऑफिशियल स्पॉन्सर हैं, टाइटल स्पॉन्सर हैं। आप इनके फेसबुक पेज पर जाइए, इनामात पाइए, अगले विनर आप भी हो सकते हैं किंगडम वैली प्राइज के। ये 5वें बॉलर हैं इमरान रंधावा, ऑलराउंडर हैं, खासे कारआमद क्रिकेटर हैं, सदर्न पंजाब के ही बासी हैं। 36 मैचों में 31 विकेटें ली हुई हैं। एक ज़माने में सुई नॉर्दर्न गैस के लिए इन्होंने बहुत क्रिकेट खेली, जिस दौर में मिसबाह उल हक कप्तानी करते थे उस टीम की, और बहुत से टाइटल उनने जीते थे डोमेस्टिक क्रिकेट में, उस टीम का हिस्सा हुआ करते थे। अच्छी रनिंग, तेज रन ले रहे हैं सर्कल के अंदर से भी। सलमान अली आगा की कप्तानी की खासियत ये भी है कि ये बैटर्स को सेटल नहीं होने देते। पर से देखें गेंद अंदर आया था, हल्के हाथों से खेला। बॉलर्स को अपने बहुत जल्दी रोटेट करते हैं सलमान अली आगा, बिल्कुल मौका नहीं देते बैटर्स को कि सेटल हों किसी भी एक बॉलर के खिलाफ। और आज सदर्न पंजाब की जो बॉडी लैंग्वेज है वो बिल्कुल बदली हुई है। हो सकता है कि जो तमाशाइयों की आमद हुई है, इस टीम के हिमायती आज बहुत बड़ी तादाद में आए हैं, यहाँ सैकड़ों लोग अभी भी मैदान में दाखिल हो रहे हैं। एक ये मुमकिन वजह हो सकती है, या फिर अब टीम बिल्कुल दीवार से लगी हुई है, इसलिए हर कोई जीत के लिए जाना चाहता है, क्योंकि पीछे मुड़कर वापस देख नहीं सकते ये। लेकिन इनसे जब भी बात हुई सलमान अली आगा से, हमेशा पॉजिटिव रिस्पांस इन्होंने दिया, और इनका होम ग्राउंड है, जाहिर है आपका एक दिल बड़ा हो जाता है जब आप अपनी सरजमीन पे खेल रहे होते हैं, और जाहिर है शायकीन का बहुत बड़ा हाथ है, और ये बेहतर करना चाहते हैं इस टूर्नामेंट में। अच्छी बॉलिंग इमरान रंधावा की, जब ये इन स्विंग करते हैं तो बिल्कुल हाथ खोलने का मौका आप देते नहीं हैं। और T20 क्रिकेट में ये वो डिलीवरी है जिस पर बॉलर के ऑप्शन भी बढ़ जाते हैं विकेट लेने के। LBW बोल्ड, और जब हाथ नहीं खुलते तो बाउंड्री लगाना भी मुश्किल हो जाता है। इस बार 4 शिया, और गेंद को पॉइंट के ऊपर से खेल दिया 4 रन के लिए। कदमों का इस्तेमाल किया, जानते थे कि कामरान गुलाम मुश्किल हो रही है खड़े खड़े खेलने में, इसलिए अपनी जगह छोड़कर वार करने में कामयाब हुए। कामरान गुलाम को ज्यादा देर आप खामोश रख नहीं सकते, इन्हें पसंद है आके अटैक करना। थोड़ा सा मोमेंटम शिफ्ट हो रहा था ATF सदर्न पंजाब की जानिब, भी अच्छी शॉट थी, कदमों का अच्छा इस्तेमाल किया, हल्का सा विकेट से नीचे उतरे ताकि वो रूम मिल सके उन्हें, जैसे आप बात कर रहे थे, अपने बाजू खोलने का मौका मिला। यहाँ पर गेंद गैप में चली है, 2 रन यहाँ पर बनाना चाहते हैं। अली माजिद गिर गए थे, लेकिन फिर भी थ्रो फेंकने में कामयाब हुए। अच्छी क्रिकेट, लगता है आज गेंद अली माजिद के पीछे है, बहुत डीप से इस बार क्रीज के अंदर रहे। अच्छा, ये चैलेंज करते हैं बॉलर को, अच्छी एफर्ट की थी
लग रहा था एक लम्हे के लिए कि 4 रन के लिए जा सकती है गेंद। सदर्न पंजाब को ये आखिरी जो दोनों मैचेस हैं ये जीतना ज़रूरी है और अच्छा मार्जिन भी होना चाहिए जीत का। क्या ये लगी थी ग्लव को? एक सरसरी सा सवाल अंपायर के सामने रखा था, जो पहले वाइड के लिए मुंह मोड़ चुके थे। क्या कमाल विकेट कीपिंग कर रहे हैं उमर सिद्दीक। पहले भी हमने इन्हें देखा, अपने दाएं जानिब इन्होंने डाइव मार के रोका था वाइड, और ये देखें फुल ऑन डाइव, एयरबॉर्न। मजा आ रहा है आज इनकी विकेट कीपिंग देख के। यहाँ 1990 में जेफरी डूजॉन आए थे मुल्तान में, उन्हीं की याद दिला दी इस बार उमर सिद्दीक ने। हालांकि ये जो है रेगुलर विकेट कीपिंग नहीं करते थे, एक ज़माने में तो सिर्फ बैटिंग ही किया करते थे, टॉप ऑर्डर में खेलते थे। और लाहौर के बड़े बासलाहियत जो नौजवान बैट्समैन थे, जो कम सिन बैट्समैन थे, उनमें इनका शुमार होता था और कहा जाता था कि लाहौर से अगली जो बिग थिंग है वो ये है क्रिकेट में। इनकी मुझे हैरत हुई है कि आपने बताया कि रेगुलर कीपर नहीं है। इनकी टेक्निक अगर देखें, ग्लव वर्क देखें तो बहुत अच्छा है, बेस अच्छी है। यहाँ आज रिकॉर्ड क्राउड होगा क्योंकि सदर्न पंजाब का मैच है और दूसरा ये वीकेंड है, सेमीफाइनल्स की भी आमद है। टूर्नामेंट जूं जूं अपने बिजनेस एंड की जानिब चला है, लोगों की दिलचस्पी बढ़ रही है। 8 ओवर्स के बाद 56 पर 2। It's pretty much balanced at this stage. You don't really feel that you can give an extra bit to any team. Some good moments for KP and a good comeback from ATF Southern Punjab as well. That's a good stop there by Faisal Akram. You feel that KP is a bit nervy. You can understand that they have had a poor run and a lot hinges on this game. Every game is a pressure game here. Oh, given. It has hit him on the front pad. He didn't go for the turn. Rehan walks. Important wicket once again. Southern Punjab has been able to take wickets at regular intervals. This is interesting. Impact in line. Ali Majid bowls wicket to wicket. Walid Yaqub, finger is raised. Southern Punjab celebrate. They're having a good passage here. KP under pressure. Still having a look for that no ball. Walid Yaqub. Nothing wrong here. Rehan Afridi will have to take the long walk back. KP struggling, 56 for 3. KP's batting lineup has been brittle and their vulnerabilities have come to the fore once again. Adil Amin, the new batter in, replacing Rehan Afridi. .68 game for him. ATF Southern Punjab now has the upper hand. Home team in front of their crowd, coming back in the game.
So important to use your feet against spin. Look at where he's standing. He's covered the whole stumps. And the ball pitching, ending up in front of middle leg. Khan got himself into an awful tangle. Just played all around it. Ali Majid just angles the ball in, zips it through, and his fans are out in numbers. Man from Kabirwala struck a vital blow for his side. Oh, missed it. Was a wide opportunity gone. Umar Siddiq couldn't collect the ball. Otherwise, surely Adil was on his way back. Ali Majid saw him slip the ball down the leg side. Umar, who's been wicket keeping quite brilliantly, for once fluffed his lines. Kamran Ghulam needs a partner there. 9 gone. It's 58 for 3. Ilyas got 2 wickets in 1 over. Ali Majid has got another. Samin Gul bowled a beautiful spell with the new ball. KP needs a partnership. Their ship is rocking. You don't often say this about them, but last few days haven't been good for them. I was looking at those numbers. Great comeback by Ali Majid. He was hit for 13 in the first over, and he's finished off at the moment 3 overs, 1 for 20. He's given just 7 runs in the next 2 overs. Hassan Khan now, left arm spin. He had a rough start. Ball has been following him around as well in the field. Ali Majid. That last over will give him plenty of confidence. Speaking of ball falling around, how good a catch was that when Hassan Khan took? It was superb. He kept his eyes on, and that actually just gave the belief, the self-belief to the team. ATF Southern Punjab. You know, one catch like that can lift the team spirit. They were being hit for boundaries. He could extract something special out there. He's lucky that didn't go for a boundary. That's a strong area for Kamran Ghulam. Look at this catch. He was hit high, he was swirling, he was going backwards. Super catch. He's a brilliant all-round fielder, Hassan Khan. We've seen this before in this tournament as well. Fielding has been indifferent in the last few days, but his standards didn't slip up. He's just brilliant. He's brilliant in the ring and brilliant in the outfield as well. Catcher is the call, and it's taken. Another one falls. Adil was under pressure. He had faced 5 deliveries for 2 runs. He's hit it straight into the throat of deep backward square leg. That ball has been following around Ali Majid. This time he was at the right place at the right time. Didn't have to move a lot. Judged it nicely. It'd be difficult under lights at times, but today ATF Southern Punjab are spot on with their catching. Adil Amin bags another failure. KP's ship is rocking. 60 for 4.
Amir Azmat is the new batter. Just like Sikandar said, that catch of Hassan Khan really gave belief to his team. They caught brilliantly, and now Hassan Khan gets himself onto the score sheet as well with that wicket. It's funny how a little bit of extra confidence can do to you. Early days in his career, a strike rate of 122, an average of 17. Will be under immense pressure. That's the wicket, swept right straight to Ali Majid. Halfway through, 60 for 4, 10 overs gone. Salman Ali Agha at the bowling crease. What happened there? That ball is the signal from umpire Walid Yaqub. They were 44 for 2 in the power play. They've just managed to add 16 runs in the next 5 overs, and they lost 2 more wickets. That's the kind of pressure they've absorbed and taken. Good comeback from ATF Southern Punjab. The moment KP doesn't know what to do. Salman Ali Agha trying to rush through the overs, get a few cheap overs in real quick. I like the attacking field. He's got a short mid-wicket. And the 2 men in the deep waiting for that slog. Just one there. You have to praise Salman Ali Agha's captaincy. He had the slip in place when he got Israrullah. Brilliant catch again by Sohaib. That'll be 4. That'll be 4. Too much width given. I think the hurry that he was talking about Salman Agha, he's forgotten that he needs to give himself time as well. Short and wide. Amir Azmat breaks the shackles for KP. Have been under a tight stranglehold, but this was a freebie. 11 gone, 67 for 4. Good crowd in. Friday night. It's weekend here. And the local side is on top. Great atmosphere inside the ground. I was just outside a while ago and you could feel in the air plenty of noise. He couldn't put that away, at least for a single. It was full toss. He's allowing himself some time, but he will soon go to his release shot because he knows he's faced 20 deliveries for 16 runs. Also the burden of knowing that he needs to put up a foundation for Sarwar and Khalid Usman. You get yourself into that kind of mindset. Kamran Gulab missed out on a full toss in this over and a long hop in the previous over, which any other day he would have hit for 4
Such is the pressure. He lifts that up in the air. Opportunity gone. Shahrun Siraj takes the catch. He's just can't believe it how that happened, because the minute he hit it, he just felt that it doesn't have enough behind it. You have to say poor choice of shot, because he was trying to hit it off the back foot for 6. No intention to keep it down. Fell away slightly from the ball, a little bit too much, and that didn't give him the power. Hassan Khan in the action once again. Cannot believe Amir Azmat what he's done. KP half the side back in the hut, 68 for 5. Well, KP really struggling. Running is not going anywhere. 56 for 2 at one stage. Now 68 for 5. Server. He's the big striker of the ball. Strike rate of 159, but he's got some time before he can unleash himself. Off the mark with a single. Let's have a look at that shot. This ball pitched and spun away, and he's moving away, so he's getting at the toe end of the bat, off the back foot. Just didn't have enough in it. Yep. Just didn't have enough in it. Suggesting he didn't see the fielder. Well, rest of us saw it. It's 12 overs ball. It's 69 for 5. उनहत्तर पे 5 12 ओवरों के बाद केपी एटीएफ सदन पंजाब शिकंजा पड़ता जा रहा है खैबर पख्तूनख्वा पे। इन दोनों पे भारी जिम्मेदारी आयत है। अब सरवर और कामरान दोनों बल्लेबाजी कर सकते हैं, जा रहे आना भी, लेकिन बॉलर्स पिक करने पड़ेंगे। ये आखिरी विकेट है। बैकफुट पे सिर्फ टाइम किया था शॉट, पूरी जान से खेला नहीं, ना फॉलो थ्रू था, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा जो फासला था वो रह गया और उन्हें यकीन नहीं आया। उनके लिहाज से ये छक्का जाना चाहिए था। इमरान रंधावा इस वक्त बॉलिंग कर रहे हैं मीडिया सेंटर एंड से, और हम ये कह सकते हैं किसी भी शक व शुबों के बगैर कि किसी हद तक सहल पसंदी का शिकार हुई है टीम जो आज प्लेइंग 11 मैदान में उतारी खैबर पख्तूनख्वा ने। उसको देखकर भी ऐसा लगता है, और जो उनके बैट्समैनों का अंदाज रहा उससे तो बिल्कुल इस बात की तायीद हो जाती है कि ये टीम सहल पसंदी का शिकार हुई है, या ज़रूरत से ज़्यादा उन्हें आसान लिया है एटीएफ सदर्न पंजाब को। आज पहले जब बात हो रही थी इनके कोच अब्दुल रहमान से, वो ये ज़रूर कह रहे थे कि हमारा मैचेस हारना बनता नहीं था, लेकिन टीम चाहती है जीतना। कुछ चेंजेस जो किए हैं वो 1-2 प्लेयर्स को रेस्ट दिया गया है। मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा अप्रोच में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। एटीएफ सदर्न पंजाब की तरफ से ज़्यादा जान मारने वाली क्रिकेट नज़र आ रही है। अच्छी बॉलिंग उन्होंने की है। केपी थोड़ा सा इस चीज़ पे जो स्टार्ट इन्हें मिला उस पर थोड़ा सा कह सकते हैं कि कंप्लेसेंट हो गया। उसके बाद आने वाले बैटर्स ने कोई ख़ास किया नहीं।
यार इनके जो बैट्समैन हैं उनको ये पिच भी रास नहीं आई। ये खासा बड़ा मैदान है क्योंकि जो बाउंड्री है वो भी 70 से ज़ायद गज की है। उसको क्लियर करना इतना आसान नहीं, आपको यहाँ मेहनत करके रन्स बनाना पड़ते हैं। पाकिस्तान कप के दौरान जो सेमीफाइनल फाइनल मरहला था, फाइनल में शिकस्त हो गई थी खैबर पख्तूनख्वा को। तो हम कह सकते हैं कि ये जो मैदान है ये शायद इतना हैप्पी हंटिंग ग्राउंड है नहीं खैबर पख्तूनख्वा के लिए। ये एक फैक्ट हो सकता है, लेकिन स्ट्राइक रोटेशन इनकी काफ़ी बेहतर है। जो एक चीज़ मेरे जहन में आती है वो कि बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं अपनी ओपनिंग पार्टनरशिप पे। हारिस और साहिबजादा फरहान जब भी चले मिडिल ऑर्डर ने आके उस फाउंडेशन को कैरी किया है। आज के बाद दीगरे विकेटें गिरती जा रही हैं और कोई जिम्मेदारी नहीं ली किसी ने भी। यहाँ 34 पर पहली विकेट गिरी और फिर 68 तक पहुंचते हुए ये आधी टीम पवेलियन वापस जा चुकी है। सरवर आफरीदी ये भी स्ट्राइकर हैं, लेकिन कामरान गुलाम को अब ये अपने शानों पर जिम्मेदारी लेनी है कि खैबर पख्तूनख्वा की टीम ये सरबसर जाए। अच्छी कप्तानी की है। दूसरी जानिब ये सलमान अली आगा ने मैंने पहले भी एक नुक्ता उठाया था कि इनकी सलाहियत ये कि रोटेशन बहुत जल्दी करते हैं। इनके पास ऑप्शंस बहुत मौजूद हैं। सलमान अली आगा के पास 13 ओवरों के बाद 72 पे 5 केपी। देखिए टॉप ऑर्डर में कुछ खास कंट्रीब्यूट कर नहीं पाए। साहबजादा भी जल्दी आउट हो गए। सराउल्ला आज मोहम्मद हारिस की जगह आए थे, वो भी काफ़ी स्ट्रगल करते नजर आए स्विंग के खिलाफ। रेहान अफरीदी भी आज इसका रामत साबित नहीं हुए। आदिल अमीन, आमिर अजमत, ये दो बड़े झटके हैं मिडिल ऑर्डर में, क्योंकि आमिर अजमत पे काफ़ी रिलाई करते हैं। थोड़ी सी रीबिल्डिंग इन दोनों को करनी पड़ेगी। हसान खान ने सिर्फ 2 ओवरों में 4 रन दिए, 2 विकेटें हासिल की। कैच भी एक शानदार पकड़ा। अच्छी बॉलिंग की है। बॉलर्स को आपको दाद देनी पड़ेगी यहाँ पर। इसे उठाकर खेला, एक बार फिर फील्डर प्ले में है जी हाँ, और कैच ले लिया फैसल अकरम ने। विकेटें गिरने का सिलसिला जारी है और हसान खान उन्होंने ये बड़ा तबाहकुन स्पेल किया है। सरवर आफरीदी नहीं क्लियर कर सके लॉन्ग ऑन बाउंड्री को। सरवर गैर जिम्मेदारी से खेल गए, जरूरत नहीं थी। हसान खान का आम के साथ अंदर जरूर गेंद आता है, लेकिन इस शॉट की अभी जरूरत नहीं थी। लालच कर गए और ये एक और बड़ा धचका। बिल्कुल भी मोमेंटम जो है वो केपी की जानिब नहीं है। अच्छी बॉलिंग एटीएफ सदन पंजाब और अच्छी फील्डिंग के बायस छठा झटका। 4 रन बना के वापस केपी 74 पे 4 6। खालिद उस्मान जो हमेशा इस टीम के लिए सहारे का काम करते हैं, बैटिंग और बॉलिंग दोनों में, और उनके लिए इस तरह की सूरत हाल में खेलना नया नहीं होगा। लेकिन इस सेंचुरी और सेंचुरी कोई नहीं है, लेकिन ये बड़े कारआमद क्रिकेटर हैं और बहुत ही अहम रन्स अपनी टीम के लिए बनाते हैं, फाइट बैक करना जानते हैं। अच्छी क्रिकेट नहीं खेली आज केपी ने। देखिए मिडिल भी नहीं कर पाए, जबरदस्ती ये शॉट खेला। यहाँ पे जरूरत ये होती है कि मोमेंटम तोड़ें, थोड़ा सा सिंगल डबल्स पे जाएं। हसान खान जो हैं ये पहले ये खासी तेज बॉलिंग करते थे, लेकिन आज ये इतनी ज़्यादा रफ्तार नहीं दे रहे बैट्समैन को। उनकी कोशिश ये है कि बैट्समैन को जनरेट करे उस स्पीड को।
बड़े मैदान पर उनको चैलेंज कर रहे हैं। 3 विकेटें ले गए हैं और ये चौथी नहीं मिलेगी क्योंकि अंपायर को 2 स्टंप्स नजर आई थी। एंगल के साथ इनका गेंद अंदर आता है, ज्यादा बड़ा टर्न नहीं करते। अच्छी फील्डिंग, समीन गुल फास्ट बॉलर ने डाइव करके गेंद को रोका और ये विकेट मेडन। इससे बेहतर आप कारकर्दगी की तवक्को नहीं रख सकते किसी भी स्पिनर से। बहुत आला। हसन खान 74 पर 6। सदर्न पंजाब आज कमाल की बॉलिंग की, इन्होंने फील्डिंग भी की। मोहम्मद इलियास ने 2 विकेटें हासिल की और 3 बल्लेबाजों का शिकार किया। हसन खान ने टूर्नामेंट का पहला विकेट मेडन ओवर किया। अली माजिद समीन गुल ने अच्छी इब्तिदा की। इकोनॉमी जो है वो आपको बताती है कि केपी इस हाल में यहाँ आप किल के लिए इनको जाना चाहिए। यहाँ इस पार्टनरशिप को जल्दी तोड़ना होगा। आप अगर ना इनके हाथों में खेलेंगे, क्योंकि ये एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो कहीं से भी ये पांसा पलट सकते हैं। क्योंकि यहाँ से खेलते हुए अगर इन्होंने 135 से 140 के करीब पहुँच गए, जो अगर ये दोनों खेलते रहेंगे तो ये पहुँच जाएंगे, तो फिर ये मुकाबले पर आ जाएंगे। क्योंकि सदर्न पंजाब की बैटिंग जो है वो ऐसी नहीं है जो तारे तोड़कर ला सके। बहुत ही करीब से कट करने जा रहे हैं और लाजवाब फील्डिंग की है। बिल्कुल मौका नहीं दे रहे केपी को सर उठाने का। इस वक्त दरकार यही है खालिद उस्मान से कि एज अ कैप्टन थोड़ी सी समझदारी से बैटिंग करें, सिंगल डब्स करें, कामरान को साथ चलाएं। कि थोड़ा सा मोमेंटम अपने पास लाना पड़ेगा। दूसरी जानिब जैसे आपने कहा सदर्न पंजाब मिस फील्डिंग की दोनों ही फील्डर्स ने। फैसल अकरम को ये गेंद रोकना चाहिए था दायरे के अंदर। वैसी छोटी छोटी गलतियां उनका कई बार मतलब बहुत ज़्यादा हो जाता है। देखिए हसन खान पहले गेंद पर लपके और उसके बाद दूसरे स्पिनर हैं फैसल अकरम, उनको तो गेंद ज़रूर वहीं पर रोकना चाहिए था। जल्दी करनी पड़ी, तेज आई ऑफ द विकेट। बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, बिल्कुल भी रूम नहीं दे रहे। देखें स्किड किया, अंदर आया। बैकफुट पे इन्होंने मैनेज जरूर किया खालिद उस्मान ने, लेकिन खतरे से कम नहीं था। एक और गेंद खाली गई। तो पिछले 2 ओवर्स में सिर्फ 3 रन्स दिए हैं एटीएफ सदर्न पंजाब ने और सोने पर सुहागा विकेट भी हासिल की। 77 पर 6। सदर्न पंजाब की खूबी जो दूसरी टीमों से उन्हें बालातर करती रही है इस टूर्नामेंट में, वो उनकी कमाल की बॉलिंग है। उनकी जो रन देने की औसत है 7.6 है और रन पर जो विकेट है वो भी सबसे कम है। लेकिन इस बार नहीं, ये शानदार शॉट और कदमों का भरपूर इस्तेमाल, फुटवर्क फैसला कुन था कामरान गुलाम का। 25 गेंदों के बाद ये पहली बाउंड्री छक्के की सूरत में। कामरान गुलाम बहुत तेजी से निकलते हैं क्रीज से। देखिए रीड कर लिया था, थोड़ा सा रूम जरूर दिया था, लेकिन बल्ले के बीचों बीच इस गेंद को लिया 6 रन्स के लिए। यहाँ ये ग्राफिक जो अभी हमने देखा ये खासा दिलचस्प था। सदर्न पंजाब की बैटिंग ने उनको खासा लेट डाउन किया है, लेकिन उनके जो बॉलर्स हैं वो मुकाबले पर रहे हैं और दूसरी तमाम टीमों से ही उनकी बॉलिंग कारकर्दगी अच्छी है। और फिर
बाहर आए। ये खालिद उस्मान की बारी थी, नतीजा वही, लाजवाब हिट, और इससे आप सीधा शॉट नहीं खेल सकते क्रिकेट ग्राउंड पर। ठान लिया इन्होंने कि हसन खान को टारगेट करेंगे, और ये सबसे महफूज एरिया है अगर आपने किसी भी स्पिनर को टारगेट करना है। अच्छा कदमों का इस्तेमाल किया जाता, टर्न नहीं है इस विकेट में। जॉब करने की कोशिश, फुल टॉस कर बैठे। इससे पहले सिर्फ 4 रन दिए थे और 3 विकेटें ली थी पहले 3 ओवर्स में, लेकिन यहाँ इस ओवर में अब तक 14 रन दे दिए और अभी भी एक गेंद बाकी है हसन खान की। यही क्रिकेट के खेल की खूबसूरती है, इसमें उतार चढ़ाव आते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि शेल में नहीं जा रहे। कामरान और खालिद जानते हैं कि सलाहियत है इनके पास, बड़ी हिट्स मार सकते हैं, स्ट्राइक रोटेशन कर सकते हैं, और यही चीज जो है वो एक बड़ी टीम तश्कील देती है। दूसरा रन बनना चाहिए, इसकी ख्वाहिश जाहिर की, दबाव में लिया और तीसरा भी यहां पर ले लेंगे। पिछले 2 ओवर्स में मिस फील्डिंग देखने को मिली है एटीएफ सदर्न पंजाब के यहाँ, और दोनों बार फैसल अकरम दोषी थे। 94 पर 6। We are witnessing the shift of pressure now. Back on Southern. Last over, we saw some misfield, some counter-attack by the KP batters. Hасан Khan has been brilliant. Wonderful cricketer. He's just magnificent in the field. Let's have a look. This was probably the catch of Multan's leg, at least. I can safely say that. Another one. Was Ali Majid Shah. And good catch. That was a bit of a nothing shot. Another good catch. Southern Punjab been brilliant. Shah Faisal alongside me. You see the shift of pressure to Southern now? You mean KP? Southern last couple of overs, yes, but overall if you look 16 overs, KP hasn't got to 100 just yet, thanks to this man, the brilliance of this man, not only in the field but with the ball as well. Enough time for KP to recover? Just about, I guess. 24 deliveries, 23 to go. What is a good score? The mind will shift to that. Two of the most senior member of KP side are on crease. Khalid Usman and Kamran Ghulam. What is the good score? Well, from there here on, if they can get to 150, they'll feel much comfortable, much confident. But Southern is a very good batting side too. They've got very formidable, very talented batters in their side. Kamran Ghulam has a job to do. Southern has underperformed with the bat though lately. And this is a pressure game, you can tell. Yeah, just a lovely crowd here. The crowd has built up very nicely here in Multan. They've come in good numbers. They've been thoroughly entertained. Look at that, those families have come. This is the third day, third night game. They've come in numbers and they will be thrilled and they will be entertained again starting from 20th September. The big tour, England touring Pakistan. That is something brilliant for Pakistan cricket. They will be entertained again in Karachi and Lahore. They've decided they're going to go after this bowling too easily. Kamran Ghulam is the key.
His role has been difficult because wickets have kept falling at the regular interval. At no stage he had the license to go after the bowling, as this is the series that England-Pakistan Ali was talking about. 20th of September, the first game in National Stadium, Karachi. The first 4 games are in Karachi. Yeah, the best part is the first day's ticket collection will go towards the flood affectees. That is a brilliant initiative by PCB. And you can go to pcb.bookme.com for your tickets, and you will be thrilled, you will be entertained, that is for sure. Because that England side is a very good side, and we know what Pakistan can do in their home soil. Back to live. KP 99 for 6. They've been in trouble, they've been under pressure. The crowd we were talking about on our right, it's almost full now. People are coming in numbers. That is brilliant. Well done, Multan. Oh, good Yorker. Good Yorker. That is a good comeback delivery to end the over by Ilyas. KP scores 100 after 17 after losing 6 wickets. Look at that. Brilliant. Well done, Multan. You made us all proud. You've entertained us all. They've been loud. Look at those numbers. We're hoping, we're expecting a full house by the semis and the final. What do you think? It's great atmosphere. Like I just said, I was outside. They're making plenty of noise. And as the tournament is gathering momentum, like you said, we expect more and more people to come. And we can expect a full house. Steady stream of people coming through the gates, even now, towards our right. This contest, the home team is in complete control. Just 3 overs to go. What can Khalid Usman and Kamran Ghulam do? Southern have brought back their ace bowler, Samin Gul. He will bowl the last 2 overs out of 3. He was just getting up for that big one. Checking his shot at the last time. He's coming back for 2. We will get it quite easily. But they're comfortably. Khalid Usman using the pace. These two are good batters, but like I said, KP midway through the innings, he really faced the pressure. Look at Khalid Usman. Ball watching for a little longer than he should have. That's why he has to really gallop at the last minute. They got to make every ball count from here. 140. At this stage, they will take it. Whether it will be enough or not, only time will tell. What an amazing story this KP side has been. This is the first time that I've seen them lose 3 games. And in trouble in the 4th also. Khalid Usman, that's a sharp one. Could be called wise. Yes, the expression says it. It's over his head. Plenty of heat on that, but that was way above the head of Khalid Usman. Deep in his crease, way too high. Even it was on the way up when Umar Siddiq took it up. KP's lowest total in this tournament is 138. They would do well to get up to that 138. In fact, it is their lowest since this new format has come in. Straight, it's in the air. There is a fielder. There is a fielder. Oh, he's dropped it. He has dropped it. They've been brilliant in the field, this southern side, and just at the wrong time, they're messing it up. That is pressure. The young Shahrun Siraj. That was a simple chance, straightforward chance. It was in the air for a long time. Hit the bottom of the bat. Khalid Usman knew his fate. But Shahrun Siraj settled underneath it. Oh, dear me. You'd catch it 9 times out of 10. Today he spilled one. Generally a very safe hand. Just doesn't come any easier than this at this level. He would be disappointed, but that's gone. Move on.
got to concentrate on the next delivery, because these are crucial overs. You got to be spot on. Again, it's in the gap. Khalid Usman will settle down for only one. This is such a huge pressure game. Look at that again. It was in the air for a long time. He just was in a position at a good time, just at the wrong time. Just when he was about to grab it, just spilled out. Yep. It's not a good feeling when you see this on the big screen. The most horrible feeling on a cricket pitch is when you drop a catch. And Shahrun is going through that moment right now. Still good over there from Samin. No boundaries conceded at this stage. Would definitely be a good over for ATF Southern Punjab. Yeah, he was the one who brought Southern Punjab back in the side, back in this match. Early on, they gave away a few runs. The first couple of overs were expensive, and then came Samin Gul. Those 2 overs were brilliant early on. And another thing that is brilliant is DEF International Cricket Championship Trophy 2022. That is starting from 1st October till 9th October. This is for the deaf cricket. That is a wonderful initiative. Really looking forward to it. That's big. That is very big. That is into the crowd. Kamran Ghulam coming into the groove. That is an excellent shot. Right in the slot. And the line and the angle, all was working for Kamran Ghulam. He's been there for quite some time, looking for the grand finish. Look at that, just got underneath it. That flick with the bottom hand gave him the elevation and the power. Out of the park. Just a jab it was. It shows the power of this boy. Amin Gul steaming in now. Good fielding, very good fielding. It has to be Hassan. He is Hassan Khan. That's a good over for KP. 113 for 6. Another excellent initiative. You can see on the back of Southern Punjab's kits, please donate to flood victims. That is just a brilliant, brilliant initiative. Talk about the crowd. Look at that. They're really enjoying their evening. Music is thumping here at Multan Cricket Stadium, and the entertainment is non-stop. Has been for quite a few days. But it's come to life when people attend cricket. And today's been the best night of the tournament so far in terms of crowd attendance, and the local side hasn't disappointed them. No team has. They've been brilliant. The games, close games, good games. The game between Sindh and KP, where Sindh won, I think that was the game of the tournament. It was a good crowd in that day. They've been entertained. And now the last 2 overs of this inning. KP looking to score some quick runs. Oh, he's picked up nicely. That is into the crowd. Forget about it. It is another 6 for Kamran Ghulam. Once again, wrong line from Ilyas. But Kamran Ghulam absolutely nailed it. Just using the pace and the angle of Ilyas. Kamran Ghulam really motoring along. Look at that angle. Just picked it up and let it soar in the sky of Multan. 48 runs for Kamran Ghulam. What an inning. And again, over extra cover. Fielder. Oh, it's over him. That is a marvelous shot for a 6. That will bring the 50 for Kamran Ghulam. There was a fielder, but he cleared him all right to get the maximum. Kamran Ghulam came good when it mattered the most.
Back-to-back sixes. This was full and wide. Once again, not much length to work with. He got as much elevation as he did. You wonder how he did it. Incredible stroke. Celebrates in style. This is a crucial knock. The shift in pressure I was talking about, it has shifted to Southern Punjab now. For the first 15 overs of this inning, it was on KP. And now it is back on Southern Punjab. Yeah, that is a no ball. He will have to re-ball that one. Pressure definitely on this young Southern side. Mohammad Ilyas already have given 13 runs, yet to ball the third delivery of the over. That is pressure. Ilyas is normally very disciplined. 2 sixes and now a free hit for Kamran Ghulam. Clearly over. The line, remember, belongs to the umpire. Ilyas is feeling the heat. The noise levels, the decibels have gone up in the stands. This is T20 cricket at its very best. Free hit for Kamran Ghulam. That's brilliant. Oh, where are you going? There's an run out. Yes, it is. Oh, what have you done, Kamran Ghulam? Just when we thought that he's going to take the KP side a long time way, he's lost his wicket. Just lost the ball. He did not know where that ball went. He had no idea. Excellent yorker from Ilyas. Look at that. He's looking elsewhere. The ball is elsewhere. Ilyas knew what was happening and he picked the pocket of Kamran Ghulam. This is splendid stuff from Ilyas. A good comeback. Few words exchanged. This is a pressure game, but Kamran Ghulam played quite beautifully for his 54. KP 126 for 7. Wonder what this wicket rather, will make a difference in the final total. As we see Arshad Iqbal now in place of Kamran Ghulam. How unfortunate was that? Heat of the moment, he just lost the plot completely. And he's so noisy. I don't know if he heard the call from his partner. He had no idea. When you see the replay, you'll see that he was looking around at square leg and the ball had just rolled straight back to Ilyas. Best of 11 tells you the story. A wicket at the right time for Southern Punjab. Can they get one more? Can they restrict KP under 150 from here? That's the question. They should. Wonderful. Oh, that went straight to the fielder. There's a chance. Made it safely. Well, done the right thing. Got Khalid on strike. Look at that. He's looking at square leg. And the ball was right up at his feet. Ilyas was aware to the situation. It seems like that he's middled it. Looked like that way he reacted to it. He was looking at that fine leg fielder that as if he has done that. But it was right there in his feet. Tense faces, for sure. And there's a delay. Hassan Khan in the field. He's injured himself. Seems like they're taking him off. Hassan Khan, probably when he picked up that ball, had a little fumble. Quickly turn around to throw. Did he twist his ankle? He's going... Is he leaving the field? I think he has. He is. Sometimes happen to the best of the fielders when they try too much, they react,
He's a brilliant cricketer, this young lad. The last two deliveries of Mohammad Ilyas spell. Good delivery. Block hole is the name of the game from here on for Southern Punjab. It's an excellent comeback from Ilyas. 3 Yorkers in a row. 2 sixes and a no ball. Remember, that was a free hit on which Kamran Ghulam lost his wicket. How much would you give them, Ali? 140? 135? Yeah, that's what Hassan Khan twisted his ankle maybe. Yeah, right there. Oh, that will hurt. Ouch. He's a brave boy. Wonderful. That is an excellent finish to this over. He should look to get 2. Khalid Usman, there was 2 available. And that is an end of a good over, rather, end of 1929 for 7. Cute. Look at that. It's so good to see. Beautifully dressed, these 2 little angels. They're enjoying cricket. And plenty more happy faces around them. Last 6 deliveries. Samin Gul to Arshad Iqbal. That's the plan. There's a chance of a run out. He's directed it. That will bring the end of Khalid Usman's inning. He had to run. And a good job done behind the stumps by Umar. Ran Khalid Usman out. And I wonder how much costly these 2 wickets will be for KP. He didn't even take the gloves off. Khalid Usman had given up. He knew he can't make it if it was a direct hit, and indeed it was. Umar Sadiq, since he's come behind the stump for ATF Southern Punjab, he's lifted the whole fielding side. Khalid Usman gone for 16. KP 129 for 8. He's been good, Salman Ali Agha, as a captain. And Samin Gul has been brilliant. There's no doubt about that. But I have a question, Shah Faisal. Was there a need of that run on the very first delivery of this over? There were 5 remaining deliveries. Even if Khalid Usman has played out the last 3 deliveries, he could have hit for 2 sixes. Was there a need? In hindsight, no, because Khalid Usman couldn't have hit 5 sixes. Good bouncer, it's in the air. Was it off the helmet? Have to wait for umpire's signal. They will do the concussion protocols. But it's the right question. No need to take a chance for just 1 run. It was Arshad Iqbal, as we watch this, off the edge, onto the temple. Could easily have ballooned to that fielder. Qasim Akram, he just aborted from that effort with the catch. Well, they missed Hassan Khan there. They'll make sure that every SOP is followed. This concussion SOPs. They'll ask him a few questions here and there. They'll smile around. As the brave man is all right. Definitely he's going to be asked which city is he in. Well, we've seen in this tournament the concussion protocols have been pretty swift.
We're quickly getting ready for the restart. 130 with 4 deliveries to go. What can Arshad Iqbal do? Well, he did this. Quick bouncer. They crossed, so Arshad Iqbal will now face. Oh, that was a quick one. Lucky that it hit that hard part of the helmet. So now the last 4 deliveries Arshad Iqbal will face. Another short one. He's steaming in. He is bowling with some venom, with some fire. Sameen Gul against his ex-teammates. Maybe he's got a point to prove. This is some fiery stuff here. Ilyas is having a smile, and one person didn't enjoy that, and that is Arshad Iqbal, because everyone else is having a huge smile. I thought they were friends. Look at that hard length again. Into the pitch, swung in. Oh, that came off the helmet, right in the front. This can be uncomfortable. Well, if you can smack a fast bowler for 6s, look at that. He's not enjoying that. Sameen Gul, you have to admire Sameen Gul's character. Incredible. A, you have hit him on his helmet. B, you're laughing on your face. That is not cool. I don't think so. That was a good idea from Sameen Gul, because he's fired up. He's been hit on a helmet. He won't like it. Well, they played a lot of cricket together as well. Don't forget that. So he's still not done yet, Arshad Iqbal. You don't laugh at somebody you've hit. Sameen Gul. He's bowled a brilliant spell though. Nothing taking away from that. Just 21 runs. He just has to finish well. Last 3 deliveries. Look at that. Don't laugh. He's already in pain. Yeah, that's what he's asking. What are you doing? Why? Block hole. Third will come in action. Just 1 run. That is a brilliant over from Sameen Gul. Finally, Sameen Gul is behaving. He didn't bowl a bumper to the tail ender. This is, you save your head or you save your toes. These tail enders would rather have the ball at their toes. Everything is fair here though, because Arshad Iqbal, if he gets the ball in his arc, he will smack him for 6, which Sameen Gul wouldn't enjoy. So, did he ask him not to bowl me another short one? Regardless if it's in his arc or not, he's going after it. That is for sure. Sameen Gul, good delivery. There is protection. 1. Did they look to get 2? Yes, they're coming. They're coming. No, he won't make it. He won't make it. Yes. Another wicket going down. Another run out. This one, a simpler one. Easy wicket for Southern Punjab, as Arshad Iqbal is run out. He's still talking. Arshad, they took a chance on the throw. This has been an incredible passage of play. Battered and bruised, Arshad Iqbal walks back. KP 133 for 9. Don't bowl a bouncer to this man, because we know what he's capable of. He's very quick. That length he gets is amazing. I don't know if you can get that reaction of Salman Ali Agha when Sameen bowled that second short pitch delivery. He's telling him, don't bowl them too many short balls. They're going to bowl at us. Oh, he's bowled him. Finishing it off in good style, Sameen Gul. The last delivery, just Yorker length. And this is the first time in this tournament that KP has been bowled out. That tells the story of their momentum in this tournament. It's going down.
First 3 balls of the over, he was aiming for the head. The last 3 for the base of the stump. And he knocked over the tall fast bowler. Samin Gul has bowled a terrific final over. And ATF Southern Punjab has really dominated this innings thanks to some splendid bowling and magnificent fielding. This was like a cup final for them, and so far ATF Southern Punjab has played it like a cup final. Absolutely. They have to win the last 2 games, and they've done the half part of this one. 133. Let's have a look at the scorecard. They've been bowled out in the very last delivery. Just one name stands out. That is Kamran Ghulam. 54 runs he scored of 40. Khalid Usman did try to be with him, but was run out on just 16 remaining. There's nothing really to talk about. Just the 2 openers, 16 and 17. And that is a surprise. That is a shock for us that Khyber Pakhtunkhwa has been bowled out inside 20 overs for just 133. Ali Majid was expensive to begin with, but then finished off very, very good. Star of the show, Hassan Khan, 3 for 21 of his 4 overs. Ilyas took 2 wickets in 1 over. That pegged KP back. 12 extras as well. 133 all out. Southern Punjab would feel a little comfortable because how this innings started was probably not the way they wanted to start. Sabzada Farhan and Israrullah started off nicely. They kept on taking boundaries. He was lucky that there was no slip for Israrullah. And then that drive really gave him a lot of confidence. Samin Gul was brilliant with the new ball. Those edges did carry, but he bowled a good spell. Sabzada Farhan motored along with him. Whenever he hits the ball, he looks such a nice view. Ilyas did try, and this was the big moment when Sabzada Farhan played a wrong shot and gave that wicket to a brilliant catch for Hassan Khan. Israrullah carried on for a few boundaries, and then this happened, the catch of the tournament, in my opinion, Sohaib Maqsood. And then came Kamran Ghulam, just held the inning together, but was shot of partners from other end. That was Rehan Afridi, had no clue whatsoever. Adil Amin, a pretty average shot. We don't expect that from him. And the wickets kept tumbling at this stage. Amir Azmat came in and he went very quickly. Another indifferent stroke, trying to hit a 6 off the back foot of a turning delivery. Sarwar also, they were just looking to clear the pens at all times, never looked to build anything. Kamran Ghulam though, he took the innings deep. You have to give him credit for that. For a brief moment, they had a flurry of boundaries and 6s with Khalid Usman really taking charge. That drop catch was the only blemish in the Southern Punjab fielding chart. Kamran Ghulam really nailed that one. And again, Ilyas under fire, 2 6s. But then, this was the second 6. But then this is what happened. Kamran Ghulam had no idea. And Ilyas conquered him. Arshad Iqbal is looking to get Khalid Usman on strike. That wasn't on. Umar Sadiq was also brilliant behind the stumps. Another chance, another awkward throw for the keeper, but he's done well. And this, where the story ended for the KP innings. Samin Gul with a fiery final over restricted the scoring. Well, this is what ADF Southern Punjab needs to achieve. 134 of 120 balls at 6.70. In a normal day, we think this shouldn't be a problem. We're gonna take a break. When we come back, we'll have live action ready for you.
Welcome back once again. Here we are, Kingdom Valley National T20 match 28, KP versus ATF Southern Punjab. Live from the Multan Cricket Stadium. It's all to play for. It's been a dismal performance, keeping in mind what KP is capable of. Just that 54 from Kamran Ghulam, otherwise the rest of them have struggled. Just one partnership that's worth talking about between Kamran Ghulam and Khalid Usman that helped them to get 133 in 20 overs all out. 3 run-outs in that. Very strange. San Khan was the star with the ball, 3 for 21. 2 wickets for Ilyas as well. Ali Majid and Samin Gul were terrific. Excellent bowling effort from the entire unit. They really complemented each other very nicely. The only blemish, you might say, 12 extras. But 133 in 20 overs, they restricted Khyber Pakhtunkhwa to. They should have their work cut out. It's not a big score that they can defend, so they need to be very, very tidy in the field and look for wickets. So attacking cricket is going to be the option. There's no other side to this. That's very important for KP over here. And also not to get carried away, because that can go against them. The focus will work. They know somewhere in the back of their mind that ATF Southern Punjab's batting is quite fragile, and they can expose that if they can get quick wickets. There's no time here in Multan. The 2 umpires are out. Final innings of the day. I think ATF Southern Punjab should win this, and should win this handsomely. They need to, because they don't have any other option. They have had problems with their own batting lineup. A bit brittle at times. Umar Sadiq and Zain Abbas will open the innings. Umar Sadiq has been a good inclusion halfway through the tournament. He was splendid behind the stumps. That lifted the entire fielding unit as well. In the early part of the tournament, Zishan Ashraf was doing the duties behind the stumps. Zain Abbas has also found some form. This is a very, very crucial passage of play. KP play a very aggressive brand of cricket. Not often you say that they've been battered and bruised by ATF Southern Punjab. The lower order batters were under fire, and you expect no different from the KP bowlers. I'll tell you what, this score to 134 to win can be very tricky. Not a huge total. It's very gettable from the looks of it. But it all depends on the power play. Umar Siddiq and Zain will hold the key. Of which direction does ATF Southern Punjab want to begin with in this chase? Arshad Iqbal is back, replacing Imran Khan Senior in the 11 today. .51 wickets, 48 games. Steam was coming out of his ears, Arshad Iqbal, when he received that nasty delivery from Samin Gul. Plays the call. Slip is in place. Good seam movement, but sloppy from Ahsanullah. That's not the start KP wanted. Like I said at the start of this innings, that what KP needs to do is control the controllables, but these things they'll have to manage, and they have to play out of their skins. Every single run is very, very precious for them, and any mishap of such sort, you just put them off the hook. He's had a good break. KP played 3 games in a row, so some of them were rested. That misfield didn't please Arshad Iqbal. He was already angry. He's even more angry now. Southern Punjab
They just need some calm heads. That's all they need. But like Sikandar said, this middle of the road total 134. Sometimes you don't know how to start. Don't want to go too hard, but then you don't want to get yourself into that shell, which is sometimes very hard to come out from. In the air, that will go all the way. He's got pace, maximum straight away. He knows there was width, and the batsman will go after it. They don't have that pressure of big score. This will help ATF Southern Punjab to get themselves off to a good start. With on offer, he threw the kitchen sink at that. Didn't come out of the middle of the bat, but plenty of bounce and pace of Arshad Iqbal to get over the fence. Well, Arshad just need to calm down a little bit. This is a good start for ATF Southern Punjab. The crowd is really loving it. Their local side, they're dominating this contest. Good sharp rise there. He has good carry. It's the surface hard, Arshad Iqbal. The change of angle. That reminds me of some West Indian bowlers of the years gone by. When they were angry, they would just steam in, appealing for everything. Rihanna really wasn't even interested. But that pace and bounce was really impressive. That's well done. Good run and a good pick up and throw as well. Umar Sadiq gives you an impression that he's a very intelligent cricketer. We've seen a lot of him with the red ball. He was actually the captain of Southern Punjab in the first class tournament, Quaid-e-Azam Trophy last year. It's quite sensible, and he judged that very nicely. Fielder had to go to his left and then get around it to make the throw. Excellent judgment of a run. That'll be a wide. Good take by the keeper there, Rihan Afridi. Had swing on that. Well, he's getting this ball through nicely, but misdirected. Plenty of heat on it. You could see Zan was late on it, but the direction wasn't right. If he gets it right, I think he'll make it hard for the batters. Good shot, uppish for a moment, but it's in the vacant zone. They end up with 15 of the first over, ATF Southern Punjab, compared to 13 of the first when KP was batting. His game is on. Angry Arshad Iqbal would now be even more angry after this boundary. This wasn't a half volley, it just went through with the shot. Just pure timing, but in the gap. Arshad Iqbal seems pretty desperate, but that 15-run over is a good start for ATF Southern Punjab. Like I just said in the previous over, it looks like we're watching the West Indies of old. Another tall, fast bowler. He likes to test the middle of the pitch as well. Extra bounce
He's been sensational in this tournament. Getting the batter to hop immediately. Should have had a speed gun here. These guys are putting in a lot of effort. Some quick bowlers we've seen yesterday. Daniel was bowling quick. He's bowling good lengths. None better sight than seeing a genuine fast bowler running in. That Samin Gulover really set the tone up for the KP bowlers. And Ehsanullah will try to match him. It's gone in the air. There's an opportunity here. It's taken. Gone. 15 for 1. Arshad Iqbal takes the catch. That might make him happy. In the action, Arshad Iqbal. A little grimace from Ehsanullah. Does the umpire want to check the no ball? Nothing wrong with that. Got too big on Zain Abbas. No control whatsoever. Arshad Iqbal in the action all the time. Zain Abbas, the informed man, gone for a duck. ATF Southern Punjab, 15 for 1. Enthralling action here at the Multan Cricket Stadium, and the weekend crowd is enjoying it. And fasten your seatbelt, because when this man walks in, you can bet $1 million that the entertainment levels will go up. Sohaib Maqsood in the middle. Will KP go with the short pitch ploy against him? Teams have used that against him before. Don't blink an eye. This contest is just sensational. They're crossed, so Sohaib will be on non-strikers. Ehsanullah, Umar Siddiq on strike. That's in the air, and that's going to go all the way because it's got pace. As soon as you give width with that kind of delivery and pace, it becomes easier for the batter. Just show the blade. Asking for trouble, this line and this length with such pace. Umar Siddiq just guided it up and over, and it went almost 10 meters over the fence. Not much effort, just using the pace, and there was plenty of it from Ehsanullah. Change of angle there from Ehsanullah. Just trying to cramp the batter up for the angle. Fine leg is up in the ring. Both the bowlers have immediately opted to come round the wicket, especially to the left-hander, because that angle is allowing them. Have a look at that. This one gone bigger on Zain Abbas. He was not in that ideal position to pull that. Nobody wanted to get anywhere close to Arshad Iqbal. He would have run them over. He wanted that ball badly. Yeah, as soon as that ball goes above your eye line, it becomes difficult to control the shot. You'll see most of the batters staying within the crease when they're facing Ehsanullah, because
is predictable in that sense. He's going to bang the ball hard into the pitch and it'll end up somewhere around your rib cage. Very hardly you'll see someone coming on the front foot and driving him, because he doesn't offer you that length at all. That's where this trickery comes, because he's got two slips. He's pushed Sohaib back. Just one delivery left in the over. Will he go for the 1-2? Will he lure him into that drive? Well fielded there. End of the over, 2 gone, 22 for 1. Southern Punjab needs 2 wins out of 2 before the start of the day. And this one, they're really in the driver's seat, you have to say. Imran Jr., I think, in the distance. Is it Server? That'll be a surprise to see Server bowl, because Imran Jr. also likes to bowl quick. Bangs the ball in. Server with the medium pace. He's looking to swing the ball, or is he going to take the pace off? 14 wickets. The average is good. The economy is good as well. Having played so many quick bowlers, but this is a change in pace there from KP. Surprised with this change, Sikandar? Not really, but maybe in the power play is a bit of a gamble. He's your bowler where the batsman will have to use force to clear the boundary. Both Arshad Iqbal and Ehsanul have got pace, so that will help them clear those big shots. So just taking a bit of a gamble, getting Server and force an error, but this can always backfire. Ooh, that's a good ball. The line, the channel is right. I don't know why Omar Siddique gave a charge. Let's just shimmy down. Look at that ball carry with the angle. That what this will do is will push Omar Siddique back in his crease. Good shot, good shot. The chase won't be won by the fielder. You see that he's shuffling in the box, Omar Siddique. He's just trying to get into Mohammad Server's mind here. Splendid piece of timing. Look at that. Just caress. Adil Amin looked like he was going to go and dive right there. That was his chance. Once it goes past him, no catching that one. Outfield is pretty quick. Timing was superb. I'd have to say personally, I didn't like that change. I would have wanted more pace, because KP, the only chance they have is to take wickets and put Southern Punjab under pressure. Oh, he's picked that up from in front of the stumps. That's a brilliant stop down there by Arshad Iqbal. 100% commitment there. And a good throw as well. This passage of play has been electric, no doubt about that. Arshad Iqbal giving it his all. But look at that. He took it right off middle and off. He would have been gone for all money if he'd missed that. But this is excellent. He's a very good athlete, Arshad Iqbal. Fast bowlers have to do that these days.
They've always missed this kind of start, ATF Southern Punjab. They've always been a spot of bother up front. Their top four have been very brittle and fragile, heavily depending on Zain. But when they got Umar Siddiq up in the order and reinforcements of Suhaib Tanveer, that's good. Kingdom Valley, a royal lifestyle. You can log on to their Facebook page and win prizes. Gone, but the change has worked. Umar Siddiq has played it back into the lap of Mohammad Sarwar. How do you like that? Definitely. KP would love this. Khalid Usman made the change and he's been rewarded. That proved a master stroke. Umar Siddiq was moving around a little bit too much on that occasion, losing his shape completely. Sarwar saw it coming. His eyes lit up and KP needed that. They would have to keep taking wickets to remain in this context. 26 for Umar Siddiq, ATF Southern Punjab, 28 for 2. Salman Ali Agha hasn't been in runs in this tournament. That average has dropped during the course of this tournament. So has the strike rate. He would love to make a telling contribution today. That's what he promised us, that he will score runs in the big game. Two batsmen, both on zero. It's like starting all over again. This 106 can really start pinching you if you lose wickets here. Salman is due for an innings, and I'm told by my colleague that he's been waiting for that big event, the big platform. This is the one. A gully and a slip. Salman is here. Well played. Needs to spend time out there, maybe take a bit of a leaf out of Shoaib Malik's knock. 3 gone, 28 for 2. Two slips for Ahsanullah again. Look at how far the wicketkeeper is and the two slips. Because of that bounce, they're way back. No, it's going down. That's surely going down. Ahsanullah is bleeding for that. He thought it was hitting the stumps. Yes, another set of stumps. Yes. As soon as it happened, the KP players are looking at the big screen and they would know that it's a good decision from Walid Yaqub. That was sliding down. Calm down, young man. Plenty of cricket left in this game, that's for sure. Oh, that's a good ball. He just came in a bit after pitching. Suhaib is good with his wrists. It really jagged back in. Look at Suhaib. He really was surprised. It just did well in the end. Serious heat on that from Ahsanullah.
is the series Pakistan-England. First day's ticket collection will go towards flood affectees. Go ahead and buy a ticket. Almost knocked it on. Well, you can go ahead and buy a ticket today and add the contribution towards the flood victims. Yeah, go to pcb.bookme.pk and buy your tickets for this series, 7 T20s. And then you were telling us about the first day's ticket collection going towards the flood affectees, and you can help them out. Whatever you buy on the first day, first T20, all of it will go in contribution to the victims. Great cause by PCB, and I'm sure it will be a sellout. England's here already. They had a training session today at the National Stadium, and we expect to see jam-packed crowds in this series. A lot of entertainment coming your way. 7 T20I series, 3 test matches later in December, but 20th September is where the action for the T20I series will start at the National Stadium in Karachi. That's a smart move to just plug that gully gap. Why give a single down to third man? They want to keep Salman on strike. They know that he's lacking runs in this national T20. So they'd be happy as much as he likes. He can absorb the deliveries. They would probably want his wicket as well. They'll have to bowl them out because it's 105 required from here. Out of 29, 26 were made by Umar Siddiq. He's gone back in the pavilion. On the pads. He'll have to pay with the boundary for that. Takes the score to 33 for 2. Wrong line. No bat on that occasion, but ATF Southern Punjab will take the boundary. Anything that'll get him to that 133 target. 4 gone, 33 for 2. ख्याल यही था कि जो कप्तान है यहाँ पर वो एक ही ओवर कराएंगे मोहम्मद सरवर अफरीदी से, लेकिन क्योंकि विकेट मिल गई तो इससे मूवमेंट भी मिल रही है और वो चाहते हैं कि कंटिन्यू कर लिया जाए। तो ये दूसरा ओवर तो बोनस है, ये ख़तरा ही मोल लिया था सरवर अफरीदी से बॉलिंग कराने का इस पावर प्ले में, लेकिन ये काम कर गया अली। अच्छी मूव साबित हुई है ये, और हमने देखा है कि हैबिट है मोहम्मद सरवर को, ये विकेट्स लेना जानते हैं। ऐसी टीजिंग लेंथ पे बॉल करते हैं जब बैटर को लगता है कि रन्स मिल सकते हैं, और उसी चक्कर में अपनी विकेट गवा बैठते हैं। और अच्छी बात है कि 2 स्लिप्स रखी हुई हैं खालिद उस्मान ने। यहाँ एक बॉलर जो है ये कम लगता है इनके बॉलिंग अटैक में। अभी मोहम्मद इमरान एक और पेसर हैं, उनको बॉलिंग करने के लिए आना है। वो ज़्यादातर पावर प्ले ख़त्म होने के बाद एक्शन में नज़र आते हैं। अरशद इकबाल का इकलौता ओवर महंगा रहा। खालिद उस्मान इस टीम के इकलौते स्पिन बॉलर हैं। आदिल अमीन 1-2 ओवर्स के लिए उनकी मदद को आ सकते हैं। या ऑप्शंस तो बिट्स एंड पीसेस की काफ़ी मौजूद हैं, लेकिन ये जो पिच है इस पर अगर एक सीमर एक्स्ट्रा होता तो ज़्यादा मदद मिल सकती थी। मोहम्मद न्याज खान को नहीं खिलाया, इमरान खान सीनियर भी बेंच पे बैठे हैं, तो चीज़ें डिफरेंट हो सकती थी। लेकिन खूबी है खालिद उस्मान
जब भी कोई अच्छा कप्तान होता है तो जो कम स्कोर होता है वो भी आपको ज़्यादा लगने लगता है। ये 134 रन जो हैं इन 2 विकेटों के गिरने के बाद, और ख़ासतौर पर ये आसानी के साथ जो स्ट्राइक रोटेट नहीं हो रहा, ये 134 जो हैं ये इस वक्त 150-155 लग रहे होंगे ATF सदर्न पंजाब को। हाँ बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने, मुश्किल करने होंगे ये रन्स केपी को, जितना मैक्सिमम प्रेशर डाल के रख सकें। इजी रन्स नहीं देने, एक्स्ट्राज नहीं देने, एक एक रन सेव करना होगा, तभी मुश्किलात पैदा कर सकते हैं। क्योंकि 101 रन जैसे आपने कहा ये बहुत लंबे हो सकते हैं। अगर यहाँ पे एक विकेट और गिरती है तो प्रेशर डेफिनेटली बढ़ जाएगा। यहाँ पे एक इनिंग ड्यू है शोएब मकसूद पे, बहुत जोर से मारने चले गए। ऐसा इंसान तब करता है जब आउट ऑफ फॉर्म होता है। फिर से स्किट करती हुई आई, स्ट्रोक खेलने में जल्दी करनी पड़ी शोएब मकसूद को, जिनको फॉर्म की तलाश है। वो अपनी पसंदीदा 1 डाउन पोजीशन पर खेलने के लिए आए हैं। इनको हमेशा से गिला रहा जब ये पाकिस्तान टीम में भी थे कि इनको वहाँ ज़्यादा ओवर्स खेलने को नहीं मिलते थे और 1 डाउन पोजीशन पर ज़्यादा बैटिंग भी नहीं मिलती थी इस T20 के फॉर्मेट में। या मिड ऑन या मिड ऑफ के ऊपर से खेलना चाहेंगे, लेकिन फिलहाल ग्राउंड शॉट खेल रहे हैं क्योंकि टीम की ज़रूरत है। यहाँ एक चीज़ जो ATF सदर्न पंजाब की फेवर में जाती है कि ज़्यादा रन्स चेज नहीं करने हैं, तो ज़्यादा डेस्परेशन दिखाने की ज़रूरत नहीं है। आप अभी टाइम ले सकते हैं, वक्त गुजार सकते हैं, पिच पे कंडीशन से यूज टू हो सकते हैं, बॉल की पेस से यूज टू हो सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा रन्स नहीं है। 101 रन्स हैं, एक अच्छी पार्टनरशिप, 2 अच्छे ओवर आपको मैच में वापस ले आएंगे। ये बॉलर्स ने मोहलत दे दी है और अब जो गेंद है वो ATF सदर्न पंजाब की बैटिंग के कोर्ट में है। सलमान अली आगा और सुहेब ये दोनों अपनी फॉर्म ढूंढ रहे हैं और इस तरह के स्ट्रोक से मदद मिलेगी। विप कर दिया इसे लेग साइड में, आला शॉट सुहेब मकसूद का, उनका पहला चौका 5 के बाद 37 पर 2। जहाँ फील्डर प्लेस किया हुआ था लेकिन टाइमिंग अच्छी रही, दूर खेले फील्डर से, और ये ट्रेडमार्क शॉट है शोएब मकसूद का। काफ़ी कॉन्फिडेंस मिलेगा इस शॉट से, और इस पिच को देखते हुए हमें लग रहा था कि शायद आज शोएब मकसूद का दिन हो सकता है। 5 ओवर्स के बाद 37 पर 2 ATF सदर्न पंजाब। यूसुफ बाबर और शारून सिराज ये 2 अच्छे बैट्समैन हैं जो इसके बाद खेलने के लिए आएंगे। ये अली माजिद या ये जो दीगर खिलाड़ी हैं ये बाद में बैटिंग करेंगे उनके। एहसान उल्लाह जो हैं उनको 2 ओवर्स के बाद अब कुछ आराम का वक्त मिलेगा और अरशद इकबाल को वापस आ गया, उनका एंड तब्दील हुआ है। पहले ये पवेलियन एंड से बॉलिंग कर रहे थे, पहला ओवर खासा महंगा रहा जिसमें शॉर्ट गेंद करने चले गए। DICC डेफ इंटरनेशनल क्रिकेट चैंपियंस ट्रॉफी ये शुरू हो रही है 1 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक UAE में। एक बहुत ही शानदार इनिशिएटिव है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये डेफ क्रिकेटर्स के लिए कि अपना टैलेंट शोकेस कर सकें। एक बार फिर जल्दी करनी पड़ी सुहेब मकसूद को, उनके पंजों पर अभी तक रखा हुआ है। अच्छी बॉलिंग की है, ये शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉलिंग का हरबा इस्तेमाल किया है इस मीडिया सेंटर एंड से। ये खासा कारगर रहा है क्योंकि लंबे कद के फास्ट बॉलर हैं और हिट द डेक बॉलर हैं तो मुश्किल पेश आती है रात के इस वक्त, खासतौर पर जब गेंद स्किड कर रहा हो। लेकिन सवाल तारिक भाई ये है कि विकेट्स लेनी होंगी, क्या इस लेंथ से आप विकेट्स हासिल कर सकते हैं? क्योंकि ये लेंथ ऐसी है जिसे आराम से बैटर नेगोशिएट कर सकता है।
एक और अच्छी डिलीवरी, एक मरतबा फिर कनपट्टी के बराबर से गई। हो सकता है कि इस लेंथ पर इस एंड से आपको विकेट ना मिले, लेकिन फायदा जो है दूसरे एंड पर वो सरवर आफरीदी जैसे बॉलर को हो सकता है। और ये बहुत ही अच्छी चाल चली थी खालिद उस्मान ने जल्दी उनको लाने के लिए। जी हाँ, बहुत ही अच्छा पॉइंट आपने रेज किया। शायद यही सोच रहे होंगे कि एक एंड से प्रेशर डाले रखिए, दूसरे एंड से विकेट्स लेने की कोशिश करें। अच्छे कप्तान खालिद उस्मान है। एहसानुल्लाह, आपकी स्क्रीन बहुत ही अच्छा आगाज हुआ है इनके करियर का। जी, और उसकी एक वजह जो है वो ओटिस गिब्सन भी हैं, जो इंग्लिश कोच हैं, यॉर्कशायर काउंटी के साथ हैं। वो मुल्तान सुल्तान के साथ थे। इस गेंद की बात करते हैं। इस साइड एज इस बार दूसरे एंड पर जाने का मौका मिला। ये सुहेब के लिए अच्छा हुआ, क्योंकि जब PSL 7 के मुकाबले हो रहे थे कराची और लाहौर में, तो मैंने बहुत गौर से देखा था एहसानुल्लाह के साथ वो बहुत काम कर रहे थे। ओटिस गिब्सन, वो मुल्तान सुल्तान के भी बॉलिंग कोच हैं, और इनके रन अप पर, इनके बॉलिंग एक्शन पर उन्होंने खासा वक्त दिया, और अब वो सिला मिल रहा है। तो आइंदा मुल्तान सुल्तान को भी इसका फ़ायदा होगा, क्योंकि ये एक स्टैंड आउट बॉलर हैं। मोहम्मद इरफान के बाद इतने कद का बॉलर हमने नहीं देखा है अभी पाकिस्तान क्रिकेट में। जी हाँ, बहुत ही हाईली रेट किए जा रहे हैं ये पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट में। और जिस तरीके से ये बॉल करते हैं, बहुत एफर्ट वाली बॉल करते हैं, लंबे कद के हैं, लेंथ बहुत शानदार है, और डरा के आउट करते हैं। ये एग्रेशन हमें बहुत अरसे के बाद फास्ट बॉलर्स में नजर आ रहा है। शोएब अख्तर पहले ऐसा किया करते थे, जब बैटर्स को डरा के आउट किया करते थे शॉर्ट डिलीवरीज से। शायद एक बार फिर हमें उन्हीं की झलक एहसानुल्लाह में नजर आए। ये फ्लेयर एक जो फास्ट बॉलर का होता है वो नजर आता है इनमें। और शानदार शॉट, ये 4 रन्स। इस बार कोई फील्डर अपनी जगह से नहीं हिल सका, और ऐसा अक्सर हो जाता है जब सुहेब मकसूद अपने स्ट्रोक खेल रहे हों। 6 के बाद 44 पर 2। बहुत अच्छा आगाज हुआ था। उमर सिद्दीक ने बहुत कमाल के शॉट खेले थे और सिंगल हैंडली रन करते रहे थे, और तब ज़ैन अब्बास अपने विकेट गवा बैठे। और वही एहसानुल्लाह का एक हार्ड लेंथ डिलीवरी, बहुत तेज बॉल किया था। उसके बाद उमर सिद्दीक ने उनको मुझे लगा सबसे बेहतर खेला है। बैकफुट पे अच्छा खेलते हैं, कट अच्छा मारते हैं, और ये एक सरप्राइज पैकेज, एक सर्वर ने विकेट हासिल की। और अब आगा सलमान और शोएब मकसूद पे भारी जिम्मेदारी है कि किस तरीके से अपनी टीम को ये मैच जितवाते हैं। ये इजी पैसेज आ गए जब स्पिनर्स आ गए हैं। ये दोनों प्लेयर अच्छा खेलेंगे स्पिन को। यहाँ खास तौर पर जो सलमान अली आगा हैं, ये तो बिल्कुल बुरा नहीं बनाएंगे स्पिनर की आमद का। बुरी तरह आउट ऑफ फॉर्म हो गए सलमान अली आगा श्रीलंका और हॉलैंड के दौरे के बाद, और क्रीज से बाहर निकले। वहां पर फील्डर हैं और ये गेंद हाथों से निकल गई। आमिर अजमत, इनसे तवक्को की जाती है कि ये ऐसे स्ट्रोक को रोक लेंगे, और तकरीबन पहुंच भी गए थे, लेकिन आखिरी मौके पर जैसे उनके हाथ दस्तबरदार हो गए। या सही तरीके से टाइम नहीं किया था शॉट। ये शोएब मकसूद ने कदमों का इस्तेमाल जरूर था, लेकिन जो पावर चाहते थे वो नहीं मिली, और थोड़ा स्लो रिएक्ट किया आमिर अजमत ने। और जैसे आपने कहा कि इस लेवल पे इतने फिट क्रिकेटर को ये बॉल रोकना चाहिए था। यार वो इसलिए भी रोकना चाहिए था कि सिर्फ 133 रन ही तो हैं बचाने को। खैबर पख्तूनख्वा की टीम जो है वो भूल भुलैयों में खो गई है। यहाँ जब से पहुंची है रावलपिंडी में, बैटिंग की भूल भुलैयों में, अब फील्डिंग की भूल भुलैयों में। ये बहुत हैरानगी वाली बात है कि अपनी टीम फॉर्म एक होती है, वो खो सी गई है इनकी।
कुछ इनके काम नहीं आ रहा है, बैटर्स रन नहीं कर रहे हैं, फील्डिंग में लैप्सेस हो रहे हैं। ऐसा फ्रस्ट्रेशन भी हमें नजर आई, क्योंकि जब आप टीम इतना जीतती आती है उन्हें हारने की आदत नहीं होती है, तो वो इरिटेट करता है कभी कभी प्लेयर्स को, और वो प्रेशर बिल्ड होता है उनके ऊपर, और यही शायद केपी के साथ हो रहा है। अब आसान क्रिकेट है ये, क्योंकि ये ऐसे तो सिंगल आराम से लेते रहेंगे ये दोनों बैटर्स। बहुत ही फॉर्मिडेबल प्लेयर है ये दोनों, इंटरनेशनल क्रिकेट खेल चुके हैं पाकिस्तान के लिए। शोएब मकसूद बहुत ही टैलेंटेड हैं, एक टाइम पे बहुत हाईली रेट किए जाते थे पाकिस्तान इंटरनेशनल टीम में, और आगा का तो फ्यूचर है। देखिए अभी आसान है क्रिकेट, सिंगल लेते रहिए, प्रेशर नहीं है, रन रेट रिक्वायर्ड जो है वो चेक में है। इनफैक्ट जो करंट है वो 7.57 की है, जो रिक्वायर्ड है वो 6.23 की है। ये हक में जाता है सदर पंजाब की। 7 ओवर्स के बाद 53 पर 2। अभी 4 ही बॉलर्स का इस्तेमाल किया गया है। मोहम्मद इमरान को अब हम एक्शन में देखेंगे, वो भी इनफॉर्म बॉलर हैं, तेज़ बॉलिंग करते हैं, और सबसे ज़्यादा उन्होंने विकेटें ली हुई हैं। तो अपने हम कह सकते हैं कि अपने जो इनके जो विकेट टेकर हैं उनको ये सबसे आखिर में लेकर आए। लेकिन ये T20 में होता है, अगर नई गेंद करने की आदत नहीं हो आपके किसी बॉलर को तो फिर इंतज़ार करना पड़ता है, जैसे हारिस रऊफ को कुछ हफ्ते पहले तक करना पड़ता था। यार इसकी बड़ी वजह है कि एहसानुल्लाह की जब से टीम में इंक्लूजन हुई है उससे बहुत फर्क पड़ा है केपी के अटैक को, क्योंकि वो भी ऐसे बॉलर हैं जो नए बॉल से विकेट्स लेते हैं, इसलिए थोड़ा कुशन मिल जाता है खालिद उस्मान को कि अपने जो लीडिंग विकेट टेकर हैं उनको लेट लेके आए। ये लेंथ ज़्यादा तंग नहीं करेगी सलमान अली आगा को, ये ज़्यादा पेस नहीं है, अगर आप इस लेंथ पे बॉल करते रहेंगे ये आसानी से हैंडल हो जाएगी। यहाँ पे लेंथ आपको एहसानुल्लाह जैसी पेस और लेंथ चाहिए, तभी आप बैटर्स को मुश्किलात में डालेंगे। मुल्तान के क्राउड ने दिल जीत लिया है, जितना लाउड और जितना ज़्यादा क्राउड आज मौजूद है हमने इस टूर्नामेंट में नहीं देखा है, पिंडी लेग में भी नहीं, और मुल्तान का भी सबसे बेहतर क्राउड आज है। नो बॉल, विकेट लेने की बहुत ज़्यादा ख्वाहिश है और उसमें बहुत ज़्यादा जोर लग रहा है, खुसूसन इस एंड से, मीडिया सेंटर एंड से, और ये इमरान का पाँव भी आगे निकल गया। इस तरह ये फ्री हिट भी हो जाएगी और सलमान अली आगा के पास ये मौका होगा कि ये अब बंद गली से निकल आए यहाँ एक बड़ा शॉट खेलकर। अच्छा, कभी कभी आपको ऐसे ही एक फ्री हिट की ज़रूरत होती है जहाँ पे आप अपने पूरे तरीके से एफर्ट करें। या ये नो बॉल ही है, अच्छा डिसीजन। अस्सी रन्स मजीद करने हैं, 77 बॉलों का सामना करना है। अगर विकेट नहीं गवाते हैं तो ये वॉक इन द पार्क है ATF सदर पंजाब के लिए। बिल्कुल, क्योंकि रात के वक्त जो है गेंद ज़्यादा बेहतर बल्ले पर आती है, बैट्समैन जो है महसूस होते हैं अपने स्ट्रोक खेलकर। इसे उठा खेला है, फील्डर ज़रूर इसे कैच कर लेंगे लेकिन इसकी गिनती नहीं होगी। ये एक रन मिल जाएगा सलमान अली आगा को। या ज़्यादा खुश नहीं है अपने इस शॉट से सलमान अली आगा, ऐसे लगा जैसे बॉल बल्ले पे सही तरीके से आया नहीं। जब आप आउट ऑफ फॉर्म होते हैं तो कुछ भी आपकी फेवर में नहीं जाता है, फ्री हिट्स भी आपकी मिस हो जाती हैं, और यही सलमान अली आगा के साथ हो रहा है। लेकिन इस अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज करना चाहिए उनको, क्योंकि ज़्यादा रन्स चेज नहीं कर रहे हैं, एटलीस्ट खड़े रहें एंड पे। अब आइंदा आने वाले मैचेस के लिए आप फॉर्म हासिल कर सकते हैं, बल्ले में बॉल लगना ज़रूरी है। शोएब मकसूद के बल्ले की ऊपरी हिस्से पर
लगी। सोहेब मकसूद का ये शहर है, मुल्तान से इनका ताल्लुक़ है और इन्हें देखने के लिए बहुत बड़ी तादाद में हामी आए हैं शहर के मुख्तलिफ इलाकों से, और आसपास के जो शहर हैं वहाँ से भी लोग आ जाते हैं क्रिकेट देखने के लिए इस स्टेडियम में, जो कि बिहाड़ी रोड पर है। यहाँ थोड़ा स्कैटर्ड है लेकिन बहुत लाउड है ये क्राउड। कमेंट्री बॉक्स में हम बहुत आसानी से आवाजें सुन सकते हैं इनकी। दोनों आउट ऑफ फॉर्म बैटर्स हैं सदर्न पंजाब के, सोहेब और सलमान। अपॉर्चुनिटी अच्छी है, खड़े रहिए, डटे रहिए, थ्रो मत कीजिए अपनी विकेट, क्योंकि रन जितने ज्यादा नहीं है। फिर एक टाइम आएगा जब आप थोड़ा रिदम में आ जाएंगे और कंडीशन से वाबस्ता हो जाएंगे, लेकिन अगर आप विकेट थ्रो कर देंगे तो फिर आपका काम नहीं आसान नहीं होगा। यार अगर ATF सदर्न पंजाब ने आज मैदान मार लिया तो फिर कल जो नॉर्दर्न के साथ इनका मैच होगा शाम के वक्त, वो उसकी हैसियत जो है क्वार्टर फाइनल जैसी हो जाएगी। और बाउंसर इसे अच्छा जा लिया रेहान आफरीदी ने, एक ही हाथ से उन्होंने गेंद को कलेक्ट किया, वगरना ये इजाफी रन्स हो जाते। ऐसा जैसे टेनिस बॉल से क्रिकेट हो रहा है, ये टेनिस बॉल क्रिकेट बाउंस है। बहुत ही शानदार विकेट कीपिंग रेहान की जानिब से। आज विकेट कीपर्स का जो मुकाबला रहा है वो बहुत टफ रहा है। उमर सिद्दीक ने बहुत शानदार विकेट कीपिंग की है और रेहान आफरीदी तो हम जानते हैं बहुत ही सीजन्ड विकेट कीपर बैटर हैं, 4 डे के लिए के स्पेशलिस्ट हैं, तो दोनों विकेट कीपर्स के लिए थम्स अप है। एक और गेंद खाली गई, लेकिन जो पॉइंट्स टेबल पर इस वक्त टीमों की हालत है उसमें सेंट्रल पंजाब ने आज 2 पॉइंट्स हासिल किए हैं और इस वक्त आप देख सकते हैं उनके 10 पॉइंट्स हो चुके हैं। उनकी आज नेट रन रेट बेहतर हुई है, बलूचिस्तान से वो बेहतर हो गए हैं। अगर बलूचिस्तान को कल शिकस्त का सामना करना पड़ा, खैबर पख्तूनख्वा से उनका मैच होने वाला है दोपहर के वक्त, और हारने की सूरत में वो भी बाहर हो सकते हैं। और नॉर्दर्न और सदर्न जो हैं अभी खासी दिलचस्पी है, क्योंकि सदर्न के 10 पॉइंट्स भी हो सकते हैं कल शाम तक 56 पर 2। TF Southern Punjab seems like a little too cautious. Salman and Sohaib. KP just keeping things under. Bowling change, server has come in again. Uppish but safe. Not intended to play in that region. Salman is trying to spend more time out there, to be really honest. 7 of 14. He's left the scoring part to Sohaib Maqsood for the moment. They weren't allowed any runs from the previous over. Sanullah keeping things tight. They might just decide to go after Mohammad Sarwar and then can open an avenue to get wickets for KPA as well. They're not even trying for the second, running the first hard, hitting the ball in the deep. Not that they need it, but it's just the fact that you be ready. Why won't you finish the game as quick as possible? Kingdom Valley Royal Lifestyle, you can log on to their Facebook page, win prizes, be a winner. It's a great opportunity for everyone.
Salman on strike. He's not out 7. That's his highest score this season. Yeah, the line is not right. That's really not right. If you make a package of boundaries, you'll see everything is being put up on the leg stump, or it's too wide outside the off stump. Free runs, they're always going to swing hard, anything going down leg. He's trying to create that angle, bringing the ball back in, but ended up on the leg stump. All he had to do was find some wood on it, raced away for the boundary. Khalid Usman might have to rethink now about Mohammad Sarwar, because that's one option where Suhaib and Salman can exploit runs out. Nothing being offered from the other end. But Arshad Iqbal, he was expensive. Ehsan has been decent. He's the one they might go after. It's a shot. He's a powerful man, strong forearms. The length was there, was in the slot. They will go after him. That's what I was saying. He gave the opportunity. It was a made-to-hit delivery for Suhaib Maqsood. Stand and deliver, a lot of bottom hand punch. Just a jab and it travelled all the way. Good steady head. Have a look at those hands, high elbow. That's a classic Suhaib shot. First time it's lesser runs and more balls available in the chase in this match. Suhaib with the 6 now, a runner ball, 23 of 23. I don't know what that was about. He was looking to bowl a shorter one, but I think he just gripped the ball too hard. He almost like pitched it on right around his own toe. Literally, I think it was way behind, even the halfway down the pitch. Another good take from Rehan. Keepers have been under the pump tonight. Some brilliant skills from them. Oh, what a ball. What a ball. It's just jagged away a little bit. End of the over, 9 gone, 70 for 2. Mohammad Imran Jr. has been brought back into the attack. He's got 16 wickets, and that's the most in a single edition of a national T20. So probably the right man to be called in to bowl. Especially for Khyber Pakhtunkhwa. Have a look at those names: Saeed Ajmal, Shaheen Shah Afridi. The batting was, of course, not up to the mark from KP, but the bowling itself also has given an impression that they've over-tried. We're talking about shorter deliveries, so to speak. They've not been well directed. There has to be a purpose behind a short ball. If it's just left alone and a wide attained by the opposition, then the purpose is lost. There, shuffling across.
and a misfield. Nothing's going right for them. That's not the KP we've seen or we know. That's poor from KP. Ihsanullah, he got there in time. Just don't know where he lost it. That's disappointment written all over it. Shuffling across, created that angle. Should have been a single. Have a look at that. Couldn't really try for the catch. He couldn't really contain the boundary. Yeah, you're right. Forget about the boundary or the misfield. I thought it was a catch. Instead of moving towards the ball, he was moving sideways. Dive. Now, Salman Agha has got a big heart. Sometimes as an opposition captain, you can sense what the bowling side is feeling, and they're down and out. Why don't you further press them down? They're going to get hard at them now. Salman Ali Agha, he knew that Imran Jr. was frustrated. He'll definitely make an error, and that's why he capitalized. Just to shimmy down the track, created that room and slammed it. They need wickets, and for that you have to have a plan and execution. Their fielding has been a big question mark tonight. It's just coming up, all pumped up. Nothing's been extracting for them. He's got a bit of bat. He was shuffling across, so his impact is in front of the stumps, but also probably pitching outside leg. He's immensely targeting that behind square area. Shuffling, trying to capitalize this over, and rightly so. They won't be just hanging around, falling behind. Look at that. An ambitious appeal from Imran Jr. They are frustrated, you can see that. .55 of 62, the singles will do it. They can afford to actually play some dots as well. 54 of 61 now. Halfway stage coming up. Just one ball to go. They've got a slip in place, and I haven't seen a single delivery that can bring that slip fielder into the play. It's all been down the leg or on leg stump. Play and a miss. Halfway stage, KP was 60 for 4. ATF Southern Punjab 80 for 2. Umar Sadiq started well, scoring 26, then Abbas. That was a good delivery. Ihsanullah took him by surprise, gone or not. These two are well settled in. 24 for Shoaib Maqsood, Salman Ali Agha, the captain, on 20. It's an important partnership. You just feel when Server bowled the first over, surprised he got a second, but then to give him another one, that's a bit pushing it. Because at that time, both the batters were new. The ball was fairly new. He's doing a bit for Server, but then after that, even when the field is open, then Server doesn't have much to offer. Yeah, maybe in the death overs, you can bring him on. It's in the air, but safe. You want your ace bowlers to be doing the hard work here. You wouldn't think that this game would travel all the way till the 19th over. You want your impact bowlers to come in and grab those wickets for you and win the game. Just a loophole, as I earlier said. It was always going to be Server for ATF Southern Punjab. They were going to exploit him. They have given them the momentum.
There you go again. That's really terrible bowling. Down the leg side. It's got that length on it. You can just help it on its way. It's not the bowling that your captain would want when you're defending a low total. They're targeting leg side, and KP bowlers are helping them to do so, to achieve their target. It's poor bowling, no purpose whatsoever. That length, even line, 3 runs. They need to get together and have a plan how to put an end to this partnership, otherwise it will be a one-sided game. I don't know about you, Marina, but what's the purpose of these so many short deliveries? I always feel you're taking out bold, you're taking out LBW, you're taking out so many things out of the equation. And when you bowl so many of them, you're getting predictable. Yes, the purpose, I think, is just dot ball, because just imagine if Ihsanullah can hit that hard length, he can make that ball rise from good length. That will unsettle Salman and Shoaib. Make them play. Well, when they will play, they'll commit mistakes. Yeah, he's all over the place. It's not going right for him. And they've brought Salman Agha back into form. He's trying too hard, really too hard, without a purpose, without a direction. Salman Ali Agha, these are freebies. He's not going to miss out on those. He's raced away to the boundary. He's created some room. And KP bowlers again, purpleless bowling from them. Yeah, the short balls, if you're looking at dot balls, 45 or 56, you need to bowl probably 25 dot balls. When you look at KP's batting and how they actually went out, they also seemed in a bit of a chaos. You have 3 run-outs in that. I mean, completely... I mean, there are very few words to describe those run-outs. And it's just... apart from Kamran Ghulam, who absorbed most of the pressure, he got his 50. The rest of them just walked in, walked out. The only partnership there was between the captain and Kamran Ghulam. End of the over, 91 for 2. They heavily relied always on the top order. 7 players in single figures, that's not a pretty scorecard for you. Earlier it was Shahzada Farhan doing most of the scoring, Haris in bits and pieces, but just the momentum at the top, that's what the middle order capitalized on, and today they lost it. And you could see the chaos we were talking about written all over. He needs to think a lot. He needs to opt for better options in terms of bowlers, where they bowl, and also field placement. You also feel that they're missing out on one frontline bowler. They don't have the services of Asif Afridi anymore. There's a important 4 overs for them. Also at the same time,
He could bat a bit. That should be four. That should be four. Yes, it is. It's been the leg stump line through and through from the KP bowlers. Whether you talk about quicks or spin, you know, trying to angle it into the right-hander, but that's easy. Yeah, the only purpose seems like they're targeting the stumps, trying to cram the batters for room. But that's too predictable now. Too full health. Also, no turn whatsoever. Easy picking. He loves going leg side. Big shot. Is this a chance? Yes, it is. A bit too late, maybe, but that's a wicket. Salman Ali Agha, the captain, has to walk. Saibzada Farhan takes the catch of the captain's bowling. Khalid Usman, the captain, dismissing the captain. It was about time. It's a gift actually from Salman Ali Agha. It wasn't needed, but trying to be fancy. Wanted to go all over the boundary. Ended up giving a straightforward catch. He's looking at his bat, but that's the short selection that needs to be blamed. Good innings. Couldn't really finish the game. Gone on 33. 80th Southern Punjab, 96 for 3. Sharun Siraj, the new batter in. But he will have to wait for his first ball to be faced. This is the way he wanted to hit, or should have hit, Salman Agha. The man has serious power, Sohaib Maqsood. That's how it's done. Rightly said. Sohaib Maqsood. He loves the spinners coming in. Got to the pitch of the delivery, middled it. Have a look at that. It's just a jab. So much power in his forearms. And a better delivery. 12 gone. 102 for 3. सदर्न पंजाब ने ये पिछले चंद हफ्तों में इन्होंने एक दो मैचेस ऐसे भी हारे हैं जो ये जीत के बहुत करीब आ गए थे। इससे सीखा होगा उनसे और हाँ, यहाँ गलती की अब गुंजाइश है नहीं। तो ये जो बाकी मादा रन्स हैं, देखिए 48 गेंदों में 32 रन्स, ये इनको बना लेने चाहिए किसी मुश्किल के बगैर। अरशद इकबाल को वापस आया गया। इनके लिए भी आज ये अच्छी रात गुजरी नहीं है अब तक। दो बहुत ही महंगे ओवर किए और उससे पहले इनको एक दो गेंदें बैटिंग करते हुए भी लगी। तब से ये गुस्से में ही हैं और इनका गुस्सा कम हुआ नहीं, क्योंकि बॉलिंग में भी कुछ ज्यादा अच्छा नहीं कर सके। और थोड़ा सा ये ओवर ट्राई भी कर रहे थे क्योंकि एक मुकाबले की भी फजा बन रही है। ये
छक्का लगाना चाहते थे सलमान अली आगा, जो अच्छी बैटिंग कर रहे थे, पेस का इस्तेमाल कर रहे थे। इससे पहले इन्हें फार एंड पर बाउंड्री क्लियर करना चाहिए, लेकिन गेंद ज्यादा बल्ले के पेंदे पर लगी। जरूर लम्हा फिक्रिया होगा खैबर पख्तूनख्वा की टीम के लिए कि मुल्तान आकर ऐसा क्या हुआ कि फतह बिल्कुल इनसे रूठ गई। तो शाह जी क्या समझते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा की टीम जो है ये मुल्तान आने के बाद इनको हो क्या गया है? क्योंकि वाकई ऐसा लग रहा है जैसे ये नॉर्थ से साउथ की तरफ आए हैं। ये जी एक से ज्यादा मानों में ये नॉर्थ से साउथ की तरफ आए हैं। उनकी फतूहात का ग्राफ भी नॉर्थ से साउथ की तरफ आया और जोग्राफियाई लिहाज से भी ये ट्रेवल किया ना नॉर्थ से साउथ। शायद नॉर्थ की टीम को साउथ रास नहीं आया। हाँ, लेट कर दिया, लाजवाब शॉट सोहेब मकसूद का, देर से खेला और 4 रन्स इस बार पा लिए। बहुत ही नरम हाथों से खेला गया स्ट्रोक था, बहुत ही आला स्ट्रोक। सिर्फ गेंद की रफ्तार को इस्तेमाल किया। सोहेब मकसूद ने बिल्कुल गेंद को करीब आने दिया, आखिरी लम्हे पर इसे रास्ता दिखा दिया कीपर के बराबर से। ये तजर्बे का कमाल है। सोहेब मकसूद जब से खेलने आए हैं उन्होंने इस चीज को यकीनी बनाया सूरत हाल का प्रेशर बिल्कुल भी टीम पर ना आए। अच्छा कंट्रोल किया, यही एक सीनियर खिलाड़ी की जिम्मेदारी है, इसे आज बखूबी निभाया सोहेब ने। दूसरा रन के लिए वापस आना चाहेंगे। सोहेब मकसूद ज्यादा तेज दौड़ते नहीं है, लेकिन यहाँ कोई मुश्किल पेश नहीं आई। और इसी का फुकदान भी था एटीएफ सदर्न पंजाब की बैटिंग में, क्योंकि कई मैचेस जो थे इन्होंने मिडिल ऑर्डर इनका जो है वो दबाव को नहीं झेल सका था। शारून ने ज़रूर अच्छी बैटिंग की, लेकिन उनके साथ दूसरे एंड पर ज़्यादा किसी ने साथ नहीं दिया। शुरू के मैचेस में शुरू की विकेटें बहुत सस्ते में निकल रही थी, बाद में ज़ैन अब्बास की जो फॉर्म थी उससे भी कुछ तसल्ली हुई यहाँ मुल्तान पहुंचकर। लेकिन यही वो मिसिंग लिंक था जो एक्स फैक्टर है कि जब सोहेब हो तो आपको पता है कि रन रेट का भी ज़्यादा इशू नहीं होता। इन दिनों थोड़ा सा वो वक्त लेकर खेलते हैं, जब तक वो हों तब तक रन रेट इशू नहीं होता। और शारून की मौजूदगी में जो अच्छी फॉर्म में थे टूर्नामेंट के इब्तिदाई हिस्से में, एक अच्छा बैलेंस बनाने में कामयाब हो गई है एटीएफ सदर्न पंजाब की टीम। क्या ये उनकी जो वापसी है ये बर वक्त साबित होगी? आज का मार्का तो लगता है कि उन्होंने मार लिया है, लेकिन अभी एक और बाकी है। बाउंसर पर ये ओवर क्या खत्म हुआ नहीं, वाइड का इशारा शोजिब रजा की जानिब से। इस बाउंसर को बचा रखा था आखिरी गेंद के लिए। अब इससे ज्यादा कॉम्पिटिटिव टूर्नामेंट हो नहीं सकता कि कल लीग स्टेजेस का आखिरी दिन है और इसके आगाज पर तमाम 6 की 6 टीमें अगले राउंड में क्वालिफाई करने के लिए अभी मुकाबले में हैं। ये खूबसूरती है इस टूर्नामेंट की, और बहुत ही ज्यादा टफ और कॉम्पिटिटिव क्रिकेट देखने में मिली है। कहीं फील्डिंग का मयार जरूर गिरा है, लेकिन बैक टू बैक मैचेस हैं, शदीद गर्मी भी थी। हाँ, ये गेंद छोड़ दी गई, जोर से अपील की, अभी तक अपील किए जा रहे हैं। अरशद इकबाल विकेट कीपर ने उनका साथ देना भी गवारा नहीं किया। ये अभी तक यकीन नहीं आ रहा अरशद इकबाल को। कोई खुशी मिली नहीं आज अरशद इकबाल को। ये भी बॉल बल्ले से गुजरने के बाद थोड़ा वॉबल हुआ। रेहान अफरीदी को आप देखिए, उन्होंने बिल्कुल भी कोई असर नहीं लिया। अरशद इकबाल अपील करते रहे, लेकिन जब मुड़कर देखा तो रेहान अफरीदी हेलमेट उठाने गए हुए थे, क्योंकि ओवर का इख्तिताम हुआ 13 के बाद 111 पे 3।
यहाँ हम कोशिश करेंगे कि रियल टाइम में ये दोबारा देख सकें, ये जो कॉट बिहाइंड की अपील थी, क्योंकि यहाँ कमेंट्री बॉक्स में स्टंप माइक्स में ये कोई आवाज़ सुनाई दी नहीं स्टंप माइक से, जिससे ऐसा तासुर मिले कि गेंद लग कर गई हो बल्ले से, और इसे उठाकर खेला। ये जोरदार छक्का है। सुहेब मकसूद, इनको बड़ा हार्ड हिटर समझा जाता है पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में, और ये उसी का मुजाहरा यहाँ अमली तौर पर पेश कर रहे हैं। और ये नो बॉल भी थी। खैबर पख्तूनख्वा के लिए कुछ भी सही नहीं हो रहा आज, और इस छक्के के साथ विक्ट्री टारगेट भी करीब आया, और इस बड़ी मार्जिन की विक्ट्री के साथ एटीएफ सदर्न पंजाब का नेट रन रेट भी बहुत बेहतर होगा। यहाँ ये पैच कर लिया ऑफ स्टंप के बहुत बाहर से। जिस तरह सुहेब ने स्क्वेयर लेग अंपायर की तरफ देखा, शायद दायरे में फील्डर जो है वो ज्यादा थे। देखिए सुहेब पर नजर रखिए, ये देखिए, और उन्होंने कहा ये नो बॉल है। अंपायर वलीद याकूब ने उनसे इत्तेफाक किया। और यहां पर और रन्स मिल जाएंगे छक्के के बाद 4 रन्स, और दरअसल ये एक ही गेंद पर ये 11 रन्स बन गए। इमरान जूनियर, इनके जो कोच हैं वो बिल्कुल भी खुश नहीं होंगे एक गेंद पर इतने ढेर सारे रन्स देने के बाद। शुएब मकसूद ने अपनी नेट सेंचुरी मुकम्मल की सिर्फ 36 गेंदों पर। ये कैरियर की 24वीं नेट सेंचुरी है, और आज की इस बैटिंग एफर्ट में एटीएफ सदर्न पंजाब की इनिंग्स को बिल्कुल कंट्रोल में रखा। ये शॉट वहां गई नहीं जहां खेलना चाहते थे, लेकिन नतीजा वही मिला। ये पहले ऑफ स्टंप के बाहर बैक ऑफ द हैंड स्लो डिलीवरी की, इस बार तेज गेंद की, ऑफलाइन हो गए इमरान सीनियर, इमरान जूनियर राधा। और जो खैबर पख्तूनख्वा के बॉलर से उनने स्कोर बोर्ड के दबाव तले उनको बॉलिंग करना पड़ी है, और सुहेब मकसूद पर कोई दबाव नहीं। 37 गेंदों में उन्होंने अपने 50 रन्स बना लिए, उनकी पहली नेट सेंचुरी इस सीजन की, और इससे बेहतर मौका हो नहीं सकता था जब उनकी टीम को अशद जरूरत थी। और इनका फॉर्म में आना सुहेब मकसूद का, ये कल नॉर्दर्न के लिए भी खतरे की घंटी है, क्योंकि नॉर्दर्न को अगर सदर्न ने शिकस्त दी तो फिर ये भी पहुंच सकते हैं, इनके भी 10 पॉइंट्स हो जाएंगे। फिर नॉर्दर्न को बाहर का रास्ता लेना पड़ेगा, उनके 8 पॉइंट्स रह जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा के 10 पॉइंट्स हैं, बलूचिस्तान के 10 पॉइंट्स हैं, सेंट्रल पंजाब के भी 10 पॉइंट्स हो गए, सिंध के भी 10 पॉइंट्स हैं। ये अच्छा शॉट, ये 4 रन्स बिल्कुल स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड। सुहेब मकसूद जबरदस्त बैटिंग कर रहे हैं आज की शाम, और उनने खुशियां दी हैं मुल्तान वालों को। जी बिल्कुल, होम क्राउड को उन्होंने बहुत एंटरटेन किया है आज। सुहेब मकसूद की स्ट्रेंथ है, बहुत ही पावरफुल खिलाड़ी हैं। बिल्कुल बॉल लेंथ बॉल नहीं थी, लो डिलीवरी थी। ऐसी बॉल को इतने ज्यादा जोर से वापस की तरफ सामने खेलना आसान नहीं होता। देखिए बॉटम हैंड से किस तरह उन्होंने इस शॉट में ताकत हासिल की, और इमरान बेबसी की तस्वीर। सुहेब का कमाल है, इस तर्ज के क्रिकेट में ऐसे प्लेयर्स कम ही मिलते हैं जो कि पावर गेम भी रखते हैं, और जब आपको थोड़ा सा क्रीज पर रुकने की ज़रूरत हो तो वो सलाहियत भी है। तो पाकिस्तान का कैरियर, उस पर जो ब्रेक लगी वो इंजरी की वजह से लगी थी, उसके बाद दोबारा अभी तक इतनी ज़्यादा क्रिकेट वो खेले नहीं। इस टूर्नामेंट के आगाज़ में भी वो इंजर्ड हो गए थे। केपी को इस पता को ज़्यादा देर तक रोक के रखना है, क्योंकि नतीजे में तो अब कोई कलाम बाकी नहीं है, कितनी देर तक रोक पाते हैं ये सवाल है। एक और बैक ऑफ द हैंड
स्लोअर वन किया और यहाँ पर दूसरा रन ये शारून। तो अब 6 ओवर्स बाकी हैं, सिर्फ 5 रन की जरूरत है ATF सदर्न पंजाब को। उनका रास्ता बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। 129 पर 3। ये इस टूर्नामेंट का पॉइंट टेबल, 4 टीमें 10 पॉइंट्स पर विराजमान हैं। यार अभी कल मौका होगा नॉर्दर्न के पास कि उनके 10 पॉइंट्स हो जाएं। सदर्न पंजाब की जो नेट रन रेट है ये बेहतर है, और अगर ये दोनों मैचेस जीत लेते हैं आज, उनकी जीत यकीनी है, आज 8 पॉइंट्स हो जाएंगे। कल अगर 10 पॉइंट्स हो जाते हैं तो ये बलूचिस्तान से भी आगे निकल सकते हैं, और बलूचिस्तान को अगर खैबर पख्तूनख्वा से शिकस्त होगी तो फिर वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे, और उस सूरत में खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, सेंट्रल पंजाब और सदर्न पंजाब पहुंच जाएंगे सेमीफाइनल में। सदर्न पंजाब के लिए इक्वेशन बिल्कुल सिंपल है, उन्होंने सिर्फ अपने मैच जीतने हैं। ये जो रन रेट है इसमें वो बाकी टीमों को पीछे छोड़े हुए हैं, और जब आप जीतते हैं तो आपका नेट रन रेट वैसे ही इंप्रूव होता है। इस जीत के बाद तो बहुत ज्यादा इंप्रूव होगा इनका रन रेट। 5.5 ओवर्स बाकी हैं, ज्यादा इम्कान है कि इसी ओवर में ये स्कोर पूरा हो जाएगा। 5 ओवर के फर्क से जीत T20 में बहुत बड़ी जीत कहलाती है। तो आज बॉलिंग में भी सिर्फ 3 विकेटें मिली, और बहुत कुछ सोचना होगा यहाँ से खैबर पख्तूनख्वा को। क्या इनका जो कॉम्बिनेशन है उसमें कोई तब्दीली की गुंजाइश है, या मास खान को या न्याज खान को वापस लाना होगा। अब्बास अफरीदी एक और ऑलराउंडर हैं, क्योंकि यहाँ आसिफ अफरीदी इस टीम का हिस्सा नहीं रहे, तो वो बहुत ही अहम किरदार थे इस टीम का। तो ये सुहेब मकसूद जिन्होंने आज दिल खोलकर पिटाई की, विकेट के दोनों जानिब शॉट्स खेले, और स्पिनर्स के लिए भी उन्होंने मुश्किल शाम बनाई। जो सामने खास तौर पर उन्होंने लाजवाब बैटिंग की, सामने वी में और विकेटों के पीछे जो वी है वो भी उन्होंने बनाकर रख दी। खैबर पख्तूनख्वा को आज की शाम भुला देनी पड़ेगी। जितना जल्दी वो इस शाम को भूल जाएं उतना ही उनके लिए बेहतर है, क्योंकि कल का मैच उनके लिए फिर बहुत अहमियत का हामिल होगा। ऐसी परफॉर्मेंस हमने देखी नहीं खैबर पख्तूनख्वा की, जिसमें वो बिल्कुल आउट क्लास हो गए हों तीनों शोबों में, कहना पड़ेगा। सलमान अली आगा ने टॉस पे कहा था कि वो इस सिचुएशंस के आदी हैं, डू और डाई के, और आज तो वो अपने इसे आजमाइश में वो पूरे उतरे। और यहाँ आज जितने फर्क से इनको शिकस्त होने वाली है, उसके बाद इनका जो नेट रन रेट है वो भी माइनस में आ सकता है खैबर पख्तूनख्वा का, और उस सूरत में कल का जो बलूचिस्तान से मुकाबला है वो इनके लिए भी डू एंड डाई साबित हो सकता है। तो अभी जो है हम किसी टीम के बारे में भी पूरे वसूख से कह नहीं सकते सिवाय सिंध के कि वो सेमीफाइनल में पहुंचे हुए। सिंध का पहुंचना जो है वो यकीनी है। कल का पहला मैच खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान, और शाम का मैच फिर लोकल टीम सदर्न पंजाब का होगा। आज क्राउड का भी इफेक्ट हुआ, बहुत बड़ी तादाद में क्राउड आए और उन्होंने अपनी लोकल टीम को सपोर्ट किया। और अब दोनों टीमों का स्कोर बराबर हो गया। तो इस मैच में ये बिल्कुल हम कह सकते हैं कि आड़े हाथों लिया ATF सदर्न पंजाब ने खैबर पख्तूनख्वा को। तो बिल्कुल आपने सही कहा कि शाज़ो नादिर देखने को मिलता है कि इतना यकतरफा मैच खेले खैबर पख्तूनख्वा की टीम का, कोई भी खिलाड़ी खेल रहे हों, और ये जो 5 ओवर्स के मार्जिन से अगर कोई टीम हार जाती है तो ये बहुत बड़ी शिकस्त है। 7 विकेटों का भी मार्जिन है, 5 ओवर्स का जो मार्जिन है,
ये अंपायर शायद मुत्तला कर रहे हैं कि अभी 2 रन रहते हैं। जो इस वक्त स्कोर बोर्ड पर स्कोर दिखाया जा रहा है उससे इत्तेफाक नहीं है। फील्ड अंपायर को जो ऑफिशियल स्कोरर हैं उन्होंने मुत्तला किया है कि अभी 2 रन बाकी हैं। शायद सब भी जो बड़ी स्क्रीन है वहां पर वो तस्सीह का इंतजार कर रहे हैं, स्कोर बोर्ड की तस्सीह का। तो अपने फील्ड को तरतीब दिया अरशद, ये अभी भी पूरे रनअप से दौड़ते हुए आ रहे हैं और कॉट बिहाइंड हो गए। स्क्वायर कट करने के लिए गए शारून, उनने देर कर दी और एक आसान सा कैच गया विकेट कीपर रेहान की जानिब। तो चौथी विकेट गंवा ली एटीएफ सदर्न पंजाब ने और बिल आखिर अरशद की कोशिशें रंग ले आई। पहली मर्तबा आज शाम मुस्कुराहट देखी और अंपायर का फैसला उनके हक में आया। दिलो जान से बॉलिंग की है, ज्यादा रन्स नहीं थे उनके पास, खातिर ख्वाह कामयाबी भी नहीं मिली, लेकिन ये एक विकेट उनके नाम आई। शारून सिराज 5 रन बनाकर वापस हुए 132 पर 4। एहसान का ये तीसरा स्पेल है, शायद इनको जल्दी लाना चाहिए था। इनका जो दूसरा स्पेल था वो जल्दी कराया जा सकता था और उसी से मोहलत मिल गई पार्टनरशिप करने की सुहेब मकसूद को आगा के साथ। और अब उन्होंने ये गैप में खेल दिया इस गेम को और इस तरह ये मुकाबला खत्म हो गया। एटीएफ सदर्न पंजाब ने 6 विकेट से बड़ी शिकस्त दी है खैबर पख्तूनख्वा को और 2 अनमोल पॉइंट्स उन्होंने हासिल किए। आज की शाम के हीरो हैं सुहेब मकसूद, उन्होंने 61 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली, 7 चौके और 3 छक्के लगाए और खुशियों की फिरामानी है इस वक्त मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में। बड़ा यकतरफा मुकाबला रहा ये एटीएफ सदर्न पंजाब के हक में। बिल्कुल ज्यादा इस टूर्नामेंट में देखा नहीं गया, बहुत क्लोज मैचेस हुए, लेकिन आज खैबर पख्तूनख्वा बिल्कुल ही ऑफ कलर नजर आए तीनों शोबों में और एटीएफ सदर्न पंजाब ने उनको आउट क्लास कर दिया। सुहेब मकसूद की वापसी, धमाकेदार वापसी हुई उनकी इस टूर्नामेंट में। इस टूर्नामेंट में जान पड़ गई उनकी इस इनिंग्स से और एटीएफ सदर्न पंजाब के खेमे में भी, क्योंकि अब सारा दारोमदार सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए कल के मैचेस पर होगा। किंगडम वैली नेशनल T20 कप बहुत ही शानदार और कम्पिटिटिव टूर्नामेंट रहा है। अब्दुल रहमान को सोचना होगा, उनका कॉम्बिनेशन काफी इफेक्ट हुआ है, उन्हें जरूर अपनी बेहतरीन हिकमत अमली के साथ कल के मैच में उतरना होगा, लेकिन आज का ये लम्हा एटीएफ सदर्न पंजाब के नाम है। यह हदफ बहुत बड़ा नहीं था, 134 रन बनाना थे एटीएफ सदर्न पंजाब को। उमर सिद्दीक ने जैन अब्बास के आउट होने की ज्यादा परवाह नहीं की और पेस का बड़ी जमामर्दी के साथ मुकाबला किया। सरवर के हाथों कॉटन बोल्ड होने से पहले और उसके बाद सुहेब और सलमान अली आगा की जो पार्टनरशिप थी उसने इस मैच को बिल्कुल वन साइडेड कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा की बॉलिंग में रफ्तार की कमी नहीं थी, लेकिन ज्यादा रन्स नहीं थे। एहसानुल्लाह ने आज फिर एक मर्तबा बहुत मुतासिर किया, 23 रन देकर एक खिलाड़ी को आउट किया। खालिद उस्मान और सरवर को भी विकेट मिली, अरशद इकबाल को भी, लेकिन
मौके की नज़ाकत के हिसाब से ये उनकी कोशिशें काफ़ी नहीं थी और आसानी शिकस्त खा गए 6 विकेटों से। सदर्न पंजाब, एटीएफ सदर्न पंजाब, उनको बहुत मुबारक हो। ये हदफ शुरू किया जैन अब्बास और उनके साथ उमर सिद्दीक थे। उमर सिद्दीक बहुत ही अच्छे टच में नजर आए, खासतौर पर जब वो ऑफ साइड में खेलने गए। जैन अब्बास ने इस बार हुक करने की कोशिश की और कैच दे बैठे अरशद इकबाल को। उसके बाद एक और शॉट गेंद की एहसान ने, लेकिन छक्का लगाया उमर सिद्दीक ने। बड़ी उम्दा बैटिंग कर रहे थे इस शॉट से पहले उमर सिद्दीक। रिटर्न कैच अफरीदी की तरफ गया और सुहेब मकसूद आए और उनने अपने जलवे दिखाने शुरू किए। बहुत अच्छा टाइम करते रहे, पेस का भी इस्तेमाल किया, फिर स्पिनर्स पर हमलावर हुए, फील्डिंग से भी मदद मिली। यहाँ सदर्न पंजाब की इस पार्टनरशिप को जो तीसरी विकेट के लिए 68 रन की थी। सलमान अली आगा जो हैं उनको भी खुशनसीबी के रन्स मिले। कई बार उन्होंने वार किए बढ़ चढ़कर फास्ट बॉलर पर और बाउंड्रीज पाते रहे। यहाँ खासा पीछे हट गए थे एहसानुल्लाह को, फिर स्वीप शॉट पर एक और बाउंड्री पा गए। यहाँ अपनी विकेट से हाथ धोए सलमान अली आगा ने। कुछ रन आज बनाए, उनके एतमाद में इजाफा हुआ होगा, लेकिन आज सुहेब मकसूद रुकने वाले नहीं थे। खालिद उस्मान को आड़े हाथों लिया, अच्छा डेफ्ट टच, पेस का इस्तेमाल। यहाँ पे किस्मत ने उनका साथ दिया। ये एक लाजवाब स्ट्रोक। शाहरुन सिराज की विकेट का नुकसान उठाना पड़ा एटीएफ सदर्न पंजाब को, लेकिन उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी थी। खिलाड़ियों की मदद से क्विक शॉट ने आज का खेल सदर्न पंजाब के नाम कर दिया। सुहेब मकसूद नाकाबिले शिकस्त, निस्फ सेंचुरी, और आज के वो यकीनन खास खिलाड़ी करार पाए। देखना होगा कि क्या वो मर्द मैदान भी बन सकते हैं या नहीं। 133 रन सिर्फ बना सकी खैबर पख्तूनख्वा की मजबूत टीम। कामरान गुलाम ने 54 रन बनाकर अपनी टीम को मुकम्मल तबाही से बचाया। हसन खान ने बहुत ही शानदार स्पेल किया, 3 विकेटें ली। मोहम्मद इलियास ने अपने पहले ही ओवर में 2 विकेटें हासिल की थी और जवाब में सुहेब मकसूद की निस्फ सेंचुरी के सबब ये मैदान मार लिया है एटीएफ सदर्न पंजाब ने। और अब पॉइंट्स टेबल पर एक नजर डाल लेते हैं। सिंध की टीम पहले नंबर पर है, उसके 10 पॉइंट्स हैं। उन्होंने अपने 10 मैचेस भी मुकम्मल कर लिए। सेंट्रल पंजाब के भी 10 मैचों के बाद 10 पॉइंट्स हैं। और कल का दिन बहुत ही अहमियत का हामिल है। खैबर पख्तूनख्वा को अगर बलूचिस्तान से शिकस्त हुई तो फिर उनको घर वापसी की राह भी मिल सकती है। एटीएफ सदर्न पंजाब को नॉर्दर्न को हर सूरत में हराना होगा, उस सूरत में वो भी सेमीफाइनल में पहुंच जाएंगे। नॉर्दर्न को अच्छे मार्जिन से सदर्न पंजाब को हराना होगा अगर उन्हें जाना है आगे। यहाँ तो यहाँ एक वक्फा आने को है, जिसके बाद देखिएगा इनामी तकरीब।
Hello and welcome to the post-match presentation of match 28. This was KP versus ATF Southern Punjab, and big win for ATF Southern Punjab by 6 wickets against KP tonight. I welcome our guest, Mr. Mohammad Nouman Ashraf. He's Sales Executive, Kingdom Valley. Thank you for joining us. And he will be presenting the Kingdom Valley Player of the Match award, the trophy, and the 25,000 rupees check to Sohaib Maqsood for his 61 of 44. I'll request him to come forward. He has 7 boundaries and 3 sixes. And Sohaib will receive his trophy and the 25,000 check from Mr. Mohammad Nouman Ashraf. Well played knock. In a low-scoring game, but he showed responsibility and finished the game off. We'll have a word with Sohaib. Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम सर। Sohaib, गेम में आउट रहना, वापस टीम में आना और फिर इस रिदम में आना इतना आसान नहीं होता होगा। इस मैच को ऑब्वियसली डू और डाई है टीम के लिए। छोटा टोटल था, लेकिन ये ट्रिकी भी हो जाते हैं कभी-कभार। आई थिंक सबसे पहले क्रेडिट जाता है बॉलर्स को। और ऑब्वियसली पिच थोड़ा मुश्किल था, स्टीप बाउंस था पिच के अंदर, लेकिन आई थिंक 130 यू टेक एनी डे, जैसा भी ट्रैक हो। तो आई थिंक क्रेडिट गोज टू द बॉलर। और मैं चूँकि पूरे टूर्नामेंट से मैचेस नहीं खेल रहा था, तो मुझे भी थोड़ी आसानी हुई कि टारगेट थोड़ा था, तो शुरू में मैं स्ट्रगल कर रहा था। तो थोड़ा सा जब मैंने टाइम स्पेंड किया पिच पे, तो आई थिंक थिंग्स गॉट ईजियर। आप मौजूद थे टीम मीटिंग्स, तो आप सुनते ही होंगे एज ए सीनियर मेंबर। क्या लगता है क्या मिसिंग था जो आज टिक बॉक्स हो गया? आई थिंक हमारा मिडल ऑर्डर, बैटिंग में हम लोग काफ़ी लैप्सेस कर रहे थे। बॉलिंग हमारी पूरे टूर्नामेंट में ही अच्छा कर रही थी। बैटिंग में आई थिंक हम लोगों की तरफ से कंसिस्टेंटली जो मिडल ऑर्डर में रन्स नहीं हो रहे थे। आई थिंक इट्स वेरी गुड साइन फॉर आवर टीम के हमारे कैप्टन ने भी आज अच्छी नॉक खेली, मैंने भी कंट्रीब्यूट किया। जैन अब्बास बहुत अच्छी फॉर्म में, उमर सदीक अच्छे लग रहे हैं। आई थिंक इन दीज टूर्नामेंट्स, T20 टूर्नामेंट्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लास्ट के कुछ मैचेस में कैसे परफॉर्म करते हैं। वी हैव अ गेम टुमारो एंड इफ यू विन वी गो टू द सेमीफाइनल, सो एवरी गेम इज नॉकआउट फॉर अस। चलिए, गुड लक फॉर दैट देन। थैंक यू सर, थैंक यू। Sohaib Maqsood, the player of the match. Now I'll invite Khalid Usman to come and have a few words. खालिद, सेम टॉक अगर मैं करूंगा आपसे कि क्या वजह है, तो ऑब्वियसली आपको पता होगा, लेकिन जो प्लान्स आप कर रहे हैं आज उनको काफ़ी हद तक एग्जीक्यूट करने की कोशिश की। डिफरेंट फील्ड पोजीशंस, बॉलिंग डिफरेंट चूज़ की, लेकिन बैटिंग कुछ आज नज़र आई कुछ केओटिक सी, जल्दबाजी में थे। जी बिल्कुल, आप सिकंदर भाई देख ले, अगर शुरू के मैचेस से तो हमारा मिडल ऑर्डर में मसला चलता आ रहा है, या शुरू में रन्स करते हैं या एंड में करते हैं। लेकिन आज वही बीच में जब आके स्लो खेलें तो उसी की वजह से टोटल आप ख़ुद देख लें हमारा 133 था, जिसमें हम T20 में आप डिफेंड नहीं कर सकते। और बाज़ मैचेस ऐसे हुए कि हम 1-1, 2-2 रन से जीते हैं। तो बॉलिंग हमारा अच्छा कर रही है थ्रू आउट द टूर्नामेंट, लेकिन बैटिंग में यही मसला चलता आ रहा है। और जितना जल्दी हो सके इस पर काबू पा ले तो अच्छा होगा हमारे लिए। फिर आपको कहीं लगता है, आपने कहा बॉलिंग ने अच्छा परफॉर्म तो किया, लेकिन उनके पास रन्स नहीं थे डिफेंड करने को, एक बॉलर शॉर्ट फील करते हैं आप? नहीं, मैंने ख़ुद भी बॉलिंग मतलब है कि इकॉनमी अगर देख ले हमारी बॉलर्स की, तो 1-2 बॉलर्स की 8 से ऊपर है, बाकी सब बॉलर्स की 7.5 है। और आप थ्रू आउट द टूर्नामेंट भी देख सकते हैं आप, बॉलिंग हमारी शार्ट नहीं है। अभी कामरान गुलाम भी करता है बॉलिंग, आदिल अमीन है, सरवर है, मैं हूँ, और ऊपर से हम 4 पेसर या 3 पेसर से जाते हैं। तो बॉलिंग पूरी हमारी, लेकिन बैटिंग में कोलैप्स कर रहे हैं। क्या प्लान रखेंगे आप? ऑब्वियसली प्लान सारे तो यहाँ नहीं बताएंगे, लेकिन आखिरी मैच है, ऑफ कोर्स एक डू और डाई है, कम से कम 10 पॉइंट से 12 आए तो मुस्तहकम हो जाएगा। जी बिल्कुल, यही कोशिश करेंगे कि अच्छी क्रिकेट खेलें और पॉजिटिव क्रिकेट खेलें, और आज जाके रेस्ट करें। और कल पहला मैच है बलूचिस्तान से, तो इंशाल्लाह अच्छी क्रिकेट खेलेंगे तो जीतेंगे, अगर अच्छी क्रिकेट नहीं खेलेंगे तो बाहर हो जाएंगे। फिर चलिए, गुड लक। थैंक यू। Captain Khalid Usman from KP. Now I'll invite the captain Salman Ali Agha from ATF Southern Punjab. Salman, first of all, congratulations. बैट से फॉर्म वापस आया, आज थोड़ी आउटिंग अच्छी रही, कैसा फील किया एज अ बैट्समैन, नॉट एज अ कैप्टन? जी बिल्कुल, ऑब्वियसली जब आप इस तरह आउट ऑफ फॉर्म होते हैं तो आप अगर इस तरह की इनिंग खेलें तो ऑब्वियसली काफ़ी कॉन्फिडेंस मिलता है। तो मुझे भी काफ़ी मिला और कोशिश करूँगा कि इसको कंटिन्यू करूँ और कल इससे ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस करूँ। क्या ऐसा डिफरेंट हुआ आज एज अ कैप्टन टीम के साथ, जो आपने उनको बताया कि बिल्कुल ही कंट्रोल था आपका, बॉलिंग में भी ओवरऑल एज अ टीम, बैटिंग तो ऑब्वियसली टोटल कम चेस कर रही थी, तो कमांड में थे? मैंने प्री मैच में भी बोला था कि हम इस सिचुएशन में ना, जब डू एंड डाई सिचुएशन होती है तो ऑल द टाइम हम अच्छा खेलते हैं, कोशिश करते हैं कि अपनी मतलब बेस्ट परफॉर्मेंस को बाहर आए। तो आज भी ऐसा ही था, जैसे फील्डिंग हम लोगों ने की, जैसे बॉलिंग की, फिर उसके बाद ऑब्वियसली बैटिंग भी। तो ये कंप्लीट परफॉर्मेंस है, जो कि मेरे ख्याल से पहली परफॉर्मेंस हमारी पूरी टूर्नामेंट की होगी जो कंप्लीट परफॉर्मेंस। वेरी हैप्पी। सोहेब मकसूद की वापसी से आपको टॉप 4 में थोड़ी स्ट्रेंथ और साथ मिल गया है? जी बिल्कुल, जैसे वो बैट्समैन है, ऑब्वियसली जैसे आज वो खेले हैं, अगर उनकी इंजरी ना होती तो वो ऐसे 1-2 मैच पहले भी हमें जितवा सकते थे, क्योंकि डेंजरस बैट्समैन है ऑब्वियसली T20 में। तो ऑब्वियसली काफ़ी मिस किया उनको, लेकिन ये है कि राइट टाइम पे उनकी वापसी और राइट टाइम पे वो फॉर्म में है। चलिए, बैक टू बैक मैचेस हैं, उम्मीद करते हैं वो मोमेंटम जो है जारी रहे। थैंक यू वेरी मच।
Captain Salman Ali Agha from ATF Southern Punjab, and they won the match by 6 wickets, and that's all from the presentation. Thank you very much, Sikandar. And this is the point table. Just 1 day remaining of league stages, and all the 6 teams are in the mix. You could not have asked for a better finish to the league stages. All to play for. 4 teams on 10 points, the other 2 on 8. Tomorrow's action, Balochistan versus KPK, a virtual quarterfinal, and Northern versus ATF Southern Punjab. The evening game is also a virtual quarterfinal. This promises to be exciting. We've had another action-packed day here today, and look at those pictures tomorrow. We expect to see plenty more action coming your way. I hope you enjoyed our broadcast today. From all of us here in Multan Cricket Stadium, we say good night and goodbye from here. Drive, and that'll be 4. Oh, good shot. उठा के रन, पीछे दौड़ते हुए मुश्किल कैच। लाजवाब कैच। Opportunity gone. Oh, it's over him. That is a marvelous shot for a 6. That will go all the way. He's got pace. It's gone in the air. There's an opportunity here. It's taken. Gone, but the change has worked. whip कर दिया इसे लेग साइड में। It's a shot. He's a powerful man.